Ladies and gentlemen, welcome back to RUTHLESS Esports presents Pro Scrims, but this time all the teams playing in this lobby will have a different role. They are from different countries. It's not based on a single region. It might be a different region as well. Yes, as we talk about the main teams that include in this list as well as in the entire Pro Scrims will be from the regions of Western Europe, Pakistan, Turkey and CIS teams. So we can actually say out the teams, those who will be playing. Let's check it out. Which are those teams, those who will be participating? Starting it from Unicorns of Love, Virtus Pro, Death Machine, Ruthless Esports, Eastern Stars, Romanian Men, Game Lord, QODEX, Nexus, ARB Champions, Team Doom, Beşiktaş Esports, AGONxI8 ESPORTS, TJB Esports, GK Esports, FTY Esports, Team Raid, as well as NATUS VINCERE, which we actually call Team Navi. But mostly, if we talk about Beşiktaş Esports, they are from Turkey, if you're not quite accustomed with it, but definitely they are going to PMGC in the upcoming time. Even when you talk about AGONxI8, I'm really excited to see what will happen because their ex-player of I8, that is Crypto, he has gone to the team of Unicorns of Love, and now they're going to face each other against, but in the same lobby. So I'm really excited to see a fight between Unicorns of Love as well as I8 Esports, because that's going to be a game changer. Might be we can see Crypto taking on against his teammates. Might just be a vice versa. It might happen that I8 will wipe out Unicorns of Love. It might happen that Unicorns of Love might wipe out I8 as well. So yep, we will have drop clashes, but more importantly, we will have only 3 games in today's day. It's going to be the day number 1 for sure. We are there with another 2 more days, but the timings will be fluctuating a bit as compared to the day number 1. But eventually, when we move on to the second and the third day, we'll have the winners of the Pro Scrims for sure. But this is the first day. Teams will try to build up the momentum, as well as they will eventually try to grab a good spot in the overall standings. Yes, you will get to see all the overall standings as well as all the data that our production team will be calculating in the back end, and definitely will be showing it on your screen. But for now, when we move on, I really want to know which are those teams that you are actually supporting. Exactly, you can spam the name out in the chat. You can just support your favorite teams, and there might be some few, if I'm not wrong, I'll just grab up some prediction or like that. I believe that I8 will have a good fan base around there. Same goes for Unicorns of Love as well as GK from the side of Western Europe. If you talk about, they've also in some Western Europe, yes, you will also have GK from Middle East as well. So they're also in some contending areas that they might pop up, and they can have a good hold for themselves in the Pro Scrims of this region. It's a multiple region clash, as I mentioned earlier. So it's not based on a single particular region where we can actually say, yes, they are the kings of this particular region for this Pro Scrims. So yeah, when it comes down to a different nation fight, I really get to see some fireball action, some fierce competition between all the teams, because when you talk about all the teams those are participating, they have established themselves in their particular region. They have been on the top list, maybe the top 16, maybe in the top 24, but they have proven them to be the top of their country and representing them in the next stages of the international lobbies like this. And special thanks to Ruthless Esports for organizing this kind of scrims in front of our audience, so that they can also have some beautiful entertainment moments as well as a time to enjoy and see their favorite teams performing and competing against the other top teams of different regions. So I really want to see the flags coming up and the team name that you are supporting in the chat, and I will definitely like to see which team has got the most highest fan base in this entire Pro Scrims. In the previous times of the previous scrims, we have seen many teams outperforming other teams, maybe a last day comeback from many teams as well. And the last, even when you talk about when there was the Middle East region clash of Pro Scrims, there were so many twisters, but now it is turning out to this multi-region clash, and I'm really hoping that we can have a great entire forum to watch out for. But we'll be waiting for the first match to get started. If I'm not wrong, it might be kind of a place when we can actually grab and hold and get a place of like Erangel in the first match, maybe Miramar, and then again in Erangel, because there is only 3 maps, so we can actually expect that kind of things. So let's just get to see, but we'll definitely look after, and we'll have a look on the flight path that will be coming very shortly of the very first match.
So let's just hope that what comes next. But for now, when I talk about, I'm gonna pick a team maybe from this list that might actually come up on the top. Maybe my prediction can be wrong, my prediction can be right, but let's see. I'll go for the first match with my favorite team maybe of this match, which might win it. So it will be Team Navi, that is NATUS VINCERE. I'll pick it for the very first match one. Let's see what the prediction goes, whether it will go in my favor or it won't. Well, the time is the virtue that will actually lead us to that position. But now we just have to see that whatever comes up next will have the upper hand. The teams who will actually outperform, who will get the winner chicken dinner in the very first match, will have the upper hand in the entire Pro Scrims. Maybe the lead of the day one can give them a complete confidence boost, a momentum boost that can actually help them to come on the top and perform better and better in the upcoming times or in the upcoming matches, because I'm really not certain, because there is only 3 matches, but in the other days you will actually get 4 matches each day. So might be 11 matches in total of a 3 years contest in this entire Pro Scrims. I'm really looking forward to what actually, like if we talk about TJV Esports as well, TJV, GK, there are also some of the teams that have actually performed in the previous time, and I8 Esports, the top team in the area, in the region of Pakistan, if we talk about, they have got a brilliant fan base, they have got brilliant skills and potential to come on the top. I8 can also be one of those contenders of this Pro Scrims, but as well as Unicorns of Love will be in that nominees as well, because they are not here to lose. Not a single team in the lobby is here to lose for sure, because all the teams actually, they are representing their country, they are representing their region in front of everybody, those who are watching the stream on live. So yep, we are not going to wait a very long time for sure, because I really believe the lobby is in making, and it will be starting off very, very soon. So we can have a call from the production end at any moment that yes, the match is on, the captain is ready, and the flight is about to take off, and we will be moving out towards the virtual map, maybe of Erangel, maybe of Miramar, but let's see where the map, where the players take us, and where the circle will lead us. But ladies and gentlemen, here we move on with a countdown of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Let's move out for the first match of this multi-region Pro Scrims presented by RUTHLESS Esports. The flight path starts up from the Nova Rupnoy, ends up in the areas of Severny. It's an eastern-oriented flight path. We can actually see it out. But definitely when you talk about in this kind of circumstances, you can get to see Unicorns of Love taking the drop of Nova Rupnoy alongside Illuminate Esports. They will be also going, but not exactly in the Nova Rupnoy, maybe a split around the corners. They're also having other teams contesting them in the military base if they're trying to go up in that area. Unicorns of Love will have no contest at all. The entire Nova Rupnoy will be in their fortress. Like more precisely, if we talk about, the entire fortress will be in their favor. No need of clashes, no need of casualties. Proper loot will be getting completed from their end. But when you come down to the other teams, it's Team EST heading towards the side of Milta Power, and they also don't have any kind of contest. That's a really, really good thing to see around. But definitely I'm looking forward to what actually comes up next, because I really believe that EST will have a good kind of formations or something like that they want to actually prove out. But the circle, it comes down to the southwestern side, keeping the central area of Ferry Pair. They are trying to get a good hold. Definitely they're trying to get a good hold. When you talk about this man, Crypto, he's a brilliant player, coming up from the side, or maybe from the region of Pakistan, but this time representing a team from Western Europe. He has got a big I would say responsibility upon his shoulders, because yes, they're his ex-teammates, that is going to be I8 Esports. They're also playing in the very same lobby, so they might be a bit accustomed with the gameplay that he is capable of, because we all know Crypto has got a brilliant gun game. But now I8 Esports, they will be coming up with some opening frags as they get Hamodi down there. ARB Hamodi gets picked up, and now ARB champions will have some early casualties to deal out, because Illuminate Esports, they're coming on the top. They've got some early momentum. They've got some early frags for sure. And this will lead a good virtue for their side. When you talk about FTY, it's going to be FTY Esports not having any kind of openings. They're still trying to go with some split loots. But Nexus Doreen will be getting picked up by RUTHLESS Esports. Salazar
He will be getting knocked out. Multiple casualties are being dealt up, and that's not at all a good sign. Not at all, because this is a really, really bad start for Nexus, because they have dealt more than one or two, maybe three, or maybe the entire team has been eradicated. But when you talk about ARB champions, they're losing one by one. It's second player, that's Humwe. He gets picked off, and R8 Esports will be cherishing their second elimination, which is a big, big start for their side. And I really believe that it will help them a lot for their start, as we are like talking about. But when it comes down to the next part, I really believe that we can have some good chances, because 3 eliminations have been secured by AGONxI8 ESPORTS. A brilliant start indeed. They came up, like if you talk about this position, ARB champions, they came up with a drop clash against Team I8. You have to be very, very certain. You have to be very sure if you're willing to take off the risks. But now when the nade is completely popped up, he's got 4 nades in his pocket, will get one down. He gets one down, might be trying to confirm him. But still the shots are making good connections. Another nade pops up. I don't think Ghost is going to survive for a very long time. But yes, whatever they're trying to do, they have to do it fast, because yes, this time Ghost gets down. Jamaz gets some exit frags for himself, because he's a single player surviving. I don't think he's going to make it up for a very long time, but he's barely surviving in a very, very low HP, while I8 Esports is charging in. Jamaz in a very low HP. I don't think he's going to survive. He's got M762, will be getting the second pick for the day. Might be just confirming him down as well. He can be the game changer. He can be the party spoiler inside of I8. He might just get a second one. Won't get a chance. He will be getting diminished, but with those 2 early casualties, after having a brilliant start, AGONxI8 ESPORTS will deal 2 casualties, will secure 4 eliminations. But is it worth it? Because they had got a good start. The 2 players got taken down by a single player only because of some casualty. That costed them the entire match, I really believe, because only 2-man, it's really difficult for a single team to carry out till the very end circles, because all the teams playing in this lobby, they're really determined. They're really extraordinary in this skill set. So it will be really tough for any other team to challenge them up only with 2 players in their lobby. Along their side might be, but definitely when you talk about in the other teams, they have VINCERE Pro. When you talk about this team, all the players still no kind of movements as of. They're in the Rozok area, still having a drop clash right now. If I'm not wrong, Anki will have a good angle over the areas of GK, and it's something that I'm looking forward to. GK Esports, what are they up to right now? Because they're up against VINCERE Pro. They're different region clash. It is a different team. If you're taking a 4v4 fight against VINCERE Pro, the entire team has already arrived in the warehouse. Well, if you talk about Toleka, he's holding onto the grounds, and definitely Anki, he's just closing in, while Old Boy will get Cats down, and that's a big opening against GK Esports, and it will definitely give them the good momentum that VINCERE Pro will actually require of. But the second need pops up inside of Toleka, might just make a good connection, but no, it won't go in the perfect place where it is supposed to go. Hope is alone, single-handedly holding the building, which is definitely not a good sign. But definitely when you talk about VINCERE Pro, he's trying to close in. Gat is trying to just keep himself safe, but I don't think he's going to be in that particular area, because the elimination point will be getting confirmed inside of VINCERE Pro. First elimination point for this side. They're taking the TPP advantages. Tolika will be getting picked off. Will they get the rotation as Anki also goes down? Hope will be picked off for sure. But this back-to-back 2 casualties might just give a good setback towards the side of VINCERE Pro. But yes, definitely when you talk about in this kind of situations, GK Esports have lost 2 of their players, which will lead them to a very back foot scenario, and a very good start for the side of VINCERE Pro, not having a single casualty. Have gotten 2 elimination points in the very starting phase of the game only. If we talk about 6.5 or maybe 7 minutes have already passed up. The first cycle is about to shrink up very soon. But on the other hand, when we talk about QODEX have also lost Watson from their end, and it's Vito and Stephen were rotating around the corners. There is another team just sitting in the backyard, just waiting for any other team to go and come up with some good rotations, so they might have a chance of getting some good eliminations from their end. But it's a different team. It's 4 Romanian men who are coming from the behind areas. It's not a good sign for QODEX, because if they're holding this kind of place or any compound for a very long time, any team will definitely try to grab that spot, because compounds are the most essential places that any team can actually desire of. So I really believe that's going to be a really game-changing point. If QODEX are willing to hold up a compound and they want to take the risks,
then definitely it's their call for sure. But Death Vane, that's Death Machine, if I'm not wrong, they're being shattered away by the players of Virtus Pro. They've wiped out one squad. They're coming up against the second one as well. 2 players have been picked off. 2 of them are still remaining, though they haven't been confirmed yet. But still, Virtus Pro won't be hesitating a single moment because they're quite aware Death Machine won't even stand a chance because they have 2 casualties. We might have got the revival as well. But the momentum is quite weak and they don't want to take any kind of risks. Though the entire team has come up with a good push. Anki will be coming up. The angles are being holded up very precisely as Anki is just jumping around, trying to make some good places. The revivals have been done. Though he gets some good angles. They might have a good connection as well. But Nevin goes down. Peace gets the opening for his side. But from a different area, a different team comes up. As we can get to say TJV. They're coming from the behind areas, if I'm not wrong for sure. Because, sorry, my bad. It's Beşiktaş Esports. Those are coming from the behind areas and they're trying to make some good impact for sure. But Virtus Pro, they just lost a chance of getting good amount of elimination points from their side. But Skorka goes down. You can also see some other team players just coming around the corners. And for sure, it's not a great sign. I really don't want to see this kind of big mistakes or blunders happening from any of the ends. But when you talk about Unicorns of Love, they're around the corners. They're trying to hold up the areas of farm. Or maybe the pancake split that we call it off. They're holding the barn houses very precisely. There's no kind of mistakes. But Korka has been completely diminished. Anki is knocked out. He needs a revival for sure. But he will be picked up as well. So from both ends, we can actually say that Virtus Pro, they are being shattered. But FTY Esports are also in some questionable part as Faithful has been completely eliminated. Biscay has been knocked out. And Rakin as well as Zurex will be the 2 players surviving from their end. So now they have to decide what they're actually winning and what they're up to because they need to give a revival. But as of now, in talk about it's a really tough card because Kurikin, he's just trying to make a good impact but will be taken down as well. So as Zorox, who will be the solo player surviving from the side of FTY Esports, haven't got a single finish point. It's going to be a really big blunder for their end. But it's 45-14 for sure. The scoreline has to turn up on a very good note. But when it's going to turn up, we're not quite certain of. And I really am really afraid that what's going to happen next. Because if Zodek gets picked off, and if he's completely eliminated, FTY Esports will also take an exit from this match in the 14th or maybe in the 14th position for sure. But it's the second circle, which is about to just shrink out as Crypto opens up his package. He gets a good amount of frags. Zorox might have got some good connections as well. But the cover fires are coming and Scripto will be getting Zorox as well from a distant hill. And with that, we can also say Unicorns of Love, they're also opening up their wings as well as the flaws that they're willing to hold up for a very long time. But now when you talk about it's BJKPs who's in the areas of just getting into some shooting areas. But definitely they're making a good impact. It's 4 eliminations that they have secured. But yes, another elimination point will be going in the way as Virtus Pro will lose another 1 player as Tulika will be the last and solo survivor from their end. So you can I just can say that it's just done and we can have some good moments coming up in the very soon because the circle is about to shrink. It's the second zone, the third circle will be coming up very shortly. So obviously it's going to be really tough. But let's just hope that everything goes right and we can just see some more action. But now we can talk about enjoy the spray he has got with that. Virtus Pro takes an exit, but from another retaliation we can get to say Victor gets him down. Won't have a stand to just get the revival completed. But the spray of enjoy was really something soothing that we were actually looking forward to. But at the very moment, it is something that I'm looking forward. It's that this is going to be a big match. But for sure, when you talk about BJ, Zessi and Enjoy, both the players have been picked. And it's going to be like San, HP as well as Peace. So I really believe that Victor has got a good choice. And I really believe that because from this position, if they want to make a good impact, they need to come up for the elimination points, and that are really crucial. Peace is coming with some frag nades, maybe coming with some smokes to just get the revival done. He's making a good smoke path for his teammate so that he can make a fallback at least in order just to get the things fixed up. But now it's time that I'm looking forward that
that might just change the entire game scenario, because the second circle, the third circle is really, really important, and the fifth circle as well. So the third and fifth circle are the most interesting one that I really prefer, because at that moment the game can actually turn up in anybody's game, and you just have to nail it out in that particular moment. But now it's just the game that we're looking forward to, because it's 11 teams, 37 players still surviving, as AGONxI8, they have entered in the main building side. So around the corners of, at this particular place, but definitely at this particular moment, will they try to go up and take those kind of chances? Because I really think that BJK, they have got 6 eliminations, they do have 2 players, and if they want to play up for a bit amount of I would say it might just be a good one. But for sure, when you talk about it's BJK, they've got 6 eliminations, and now they're looking forward to get some more, because still now there are 11 teams remaining, 36 players are in the lobby, so they do have a chance of getting more and more kill points in their particular moment, maybe some elimination points, as we can actually see. But I really believe that it's Navi that I'm looking forward, because I've picked them for sure, and it's Kitsune as well as Matic, who has been completely eliminated, and it's Navi and the company. They are still into the fights. As when talk about Doom, Joey Bot, he has been picked off, and now I'm looking forward to grab some good opportunities. They are actually looking forward to get some good opportunities, because Joey Bot has been picked off. So when it comes down to the next part, Team Doom, what are they up to right now? They haven't got any single finish point, or maybe an elimination point. But how are they going to just give you the particular sound, and you might just try to make some good connections, as I really believe that it's going to be really tough for sure. But now, as the time is passing by, so we can actually see that for Romanian main are also including themselves in some this kind of fights, and now it's just going on and on, because Doom Joey Ball will be getting picked up as well. So that actually marks up that 11 teams are still in the question. So I don't know that. Let's just go out and just see what happens, because now the revivals are being started, and now the players will get Radix Logsar as well as Z down there, as we can actually see that Dinar Yalo will be getting picked off. So the nades are coming on the corners, and they are chancing up. They're trying to make a good impact for themselves for sure. But Frosty, this nade might just make some good connection. But RUTHLESS Esports will be on the corners. Some damages are being dealt, and Frosty goes down. It's a very distant hell fight, and definitely they're making this connect as well. So no question, no thing. But yes, that's something that I am really, really liking it, because at this moment, when I talk about RUTHLESS Esports, all the players are just exactly in front of you, and you actually know the positions where are they standing right now. So it's something really, really important, I really believe, because that will actually get some good opportunities. But as of now, 2 eliminations have been registered by these players, so I can actually. But right now, when the situation calls up, I really believe the shots have been taken out. There are multiple shots from side of GL, GRD, VVSOP, but they're just trying to make some good connections as well as. But Sting and so I just want to see that what happens next, because it's just to finish the eliminations that they have secured, but they've got a good potential for sure. But now it's the 4 Russian Romanian men that are sending around the copters, and now they're just going back, I really believe. But from that particular area, EST, I would say that this is something that we are really, really looking forward to. 3 eliminations, and right now at this moment the things are just changing up and up and up. So at this particular moment, we actually can say that the circle is exactly shifting towards the eastern side, keeping Universe of Love in the very dead center, and the Crypto and his team has got a very, very huge advantage, which they can actually use it to win this particular event. So let's just see, and let's just hope that everything goes fine and well. But when it comes out of the circle, and we actually know that many are the places that, like,
Okay, so well, we have to see that what comes up next because Raid they're taking the fight. They have got 5 eliminations for them for sure. And with that, when it comes down to the main needing part or maybe the utility usage, we can actually say that like Uzum gets picked off. We will be getting confirmed as well. Son gets down by the other players of a different team, but I8, it's just last player. The pre-nade might just work. It actually worked out. The smoke, oh my god, the deep, like S12K. It actually did not work out, but the try was really best. I really thought that he assumed that yes, like it was all done and the pre-nade actually worked out. He actually did not expect that there will be another player just hoping around the corners of the right hand side. So it was definitely something really difficult, but for now it's the Unicorns of Love, those who have secured 3 eliminations in their favor, and they're up against Team EST. So EST, when you talk about in this kind of situations, it's well, I would just say that it's Gunnar, it's Ginar Valo who's just going up with the revival. He's just trying to get Victor up on his knees because at this moment it's just a minimal thing that he can just do because it's just a single hope that he's carrying out right now. But GL Dux 1977, when you talk about this player, so he's also just got into that particular like area. But when it comes down to QODEX, they're still with the 2 players, only 1 elimination they have secured as of now. But when it comes down to EST, Kemi, GL, the players, they're also trying to make a good impact. They're trying to get those elimination points for themselves, but the Doom Easy is playing exactly inside the circle. So I am not just going on to the other side because I really believe that it's just a point, but it's Doom Easy versus Codex Stephen, who's trying to make a good impact, but the smokes and the covers, those are very, very much necessary. We have to just go back because that's the only way. But more or less, when you talk about in these kind of situations, I really think that the Pro Scrims, it's just getting lightened up because the match 1 was just coming into question. And now we've come up with the top 7 teams in the lobby. Doom Easy as well as Zero. They're looking up against that. What is going to happen when? Well, I would just say that it's just the start, but oh, Raid, look at that. He just comes up and just runs over the player and get that elimination point for himself. Well, Luxor will have a privilege. The needs are just trying to make a good connection, and if it actually makes it 1, it will be really, really helpful. But Luxor, the needs, the utilities that are being used are really, really precise. And when you talk about in this kind of scenarios, I really believe that Luxor is having a good hand as well, just to get some good. And I really just called it out that yes, we can just go up with the utility usage from the side of Team Raid. I'm really accustomed because the amount of needs and the utilities they are actually carrying out. So because obviously at this point it's really tough for any of them to just give it all. And but I would say that yes, the knockouts are being done, and yes, Luxor as well as Vitamin, they are also just making some good impact as slowly and gradually the things are just getting heating up, and definitely it's something that we are looking forward to. So now it is the time that we seek up because EST, they are in some serious trouble because there is only solo player surviving. That's Bazi, though the smokes will be done, but I don't think that he can just get up for a long time because that's just something that we're looking forward to. But now it's Salazar who comes up with some good sprays. 8 eliminations have been registered by Ruthless Esports. They want to make it big. They want to make it a really big bomber for themselves as well. But when it comes down to the next particular show, well, I really want to see that what happens next, because as of now Salazar is trying to make some good impact, or Salazar might be just getting spotted as well. They are trying to come up with some pre-needs or maybe some connections that we are really looking for. So when it comes down again, if you talk, so I really think that it's not going to be possible for any of the teams to just get a hold of that position. But now Ruthless Esports is just going on a rampage, but right now Crypto gets another opening, and that is not a great sign for them. But when it comes down to
But as of now, the crypto, basically, if we talk about, it's Unicorns of Love. Those are making a good impact. They're just drawing up the enemy's attention. They're seeking up for the kill points for sure, and they're trying to make this happen for sure. As we talk about, at this very, I would just say that it's just something that I'm looking forward to. But it's young that is trying to come up with some utilities, might just be trying to make some good connections, while I believe that Luxor is just trying to back off a bit because it's something that I'm looking forward to, because it's Young take on Vitamin. If you talk about, it's team number 3 versus team number 19. The fight actually goes up and continues. While in the team number 3, we can actually get to see a different, it's Unicorns of Love slot, but there's a different team playing. But from the team number 19, you talk about, it's something around, if you talk about, it's Team Raid who is just coming in the question. So Team Raid will have a chance to just get a collab, and I don't think they want to miss up this opportunity. As Unicorns of Love, they've got 6 eliminations in their favor, though Crypto is checking twice for that particular scenario. And what a player he is. He's one of the most best players that actually can, I would say, it's something is very common, and I really believe that actually comes up because Unicorns of Love, and talk about this big huge name, it's a really big huge name, so you have to carry the burden of that. Unicorns of Love, what are they planning up next? Because Team Raid, they're just willing up because 11 total freaking finishes they have they are actually challenged and just gonna take. So you can just actually see it that we can actually just go up with this kind of flow. But as of now, when you talk about Crypto, has been completely spotted. 6 eliminations have been done, though we can actually say that at this moment, Gonzo Boss, they're trying to make some good connection, but Vitamin, he's just getting some good openings and whatever he can just actually collect out. So it's something that I'm looking forward to. But definitely when you talk about it, it's Victor versus Gonzo Boss, which is really important. And if anything comes out directly, we'll have a complete overall standings as well. But after this match only, you will get to see the match 1 standings. But now it's Unicorns of Love versus DK Esports. But when it comes down to the next part, I really believe that Victor or is going to be Ganzo Boss who's going to win. But the shots of the M4, it has been taken, the position has been compromised. Kylo is knocked out, and now with that, we're getting another one. So it's something that I'm really looking forward to. But now it's the time, ladies and gentlemen. The first match comes to a very end when it comes up. It was a tremendous match. It was a tremendous game. But definitely there is only one champion who takes the crown in their side. And with that, the match one comes to a very end. And the Pro Scrims is presented by Ruthless Esports. The first match of the day number 1 is a really interesting one that has already been completed. The 2 more matches to go on the very day 1. And I'm looking forward to what matches and what match veto will be decided for the next 2 games. Is it going to be a Miramar and another Erangel, or is it going to be Ball? All the matches are going to be in Erangel for sure. So we have to look into that. But before that, let's see that whether we can just get some kind of breaks. Maybe we'll have a break or not. We'll have to see it. So I really believe that we can have a good time and with the highlights for sure. But we have actually collected in this entire match, starting off from the military base drop clash. 3 eliminations have been secured by some other persons, but definitely when you talk about, it's Jamaz who actually gave a pressurized moment to the side of Eliminate, because for a very particular long time they were actually not just going. So we'll have to see what comes up next. But definitely the fights, the clashes, the rotational clashes, the drop clashes, as well as all the fights that have actually happened in this particular movie, what it was really nice. But when it comes down to the next part, it's FTY Kraken as well as the other teammates, those who actually try to make a good impact for sure. FTY Esports, they have got a good start, but eventually Zorox, being a solo player, couldn't manage it up for a very long time. BJ,
Okay, enjoy. We actually gave a really brilliant spray, and the way he just eliminated Virtus Pro was really commendable and was appreciable as well. But from the different angles, some different fight happened. Multiple casualties were dealt. I8 Esports also took a very early blow. Unicorn Esports, they managed to come up with a good start, but not on the top for now, because there are many players. There are many you know situations that are coming up. But definitely we'll move on to the match wise standings and the stats that our production team has already made up, and it's the match ranking that speaks of, and total of 29 points in the pocket. This is a start. This is a brilliant start that they have got. Team Raid will be with 21 points. Unicorns of Love will have 18. Ruthless Esports will have 16. ESC with 9. BKJ with 7. PVT with 4. I8 with 4. As well as when we talk about but at the very moment we talk about the different point standings, Geeky Esports, they might be on a they have been eliminated in the very early spot, so that actually creates a stumbleness that we can actually just go up and get the things right on the track from the next match for sure. But from the next team, we've got the match-wise rankings, and now we'll have a look on the other stats as well. So I believe the overall after the match one, we've got the standings what we were waiting for. So I really believe that we can have a short break. Maybe not. We'll have to see it. But when it comes down, the PT looks in a quite interesting manner, and the pro scrims is just coming in the question. So I believe that Ruthless Esports, they're trying their level best to grab things good on the spot. So we can just see and we can just wait, because the first match is already over. 2 more matches to go in this day number 1. So we'll have a short break, and we'll be coming up with the second match on the other side.
ladies and gentlemen, we have seen a brilliant match. One coming up around the corners. A total of 3 matches will be conducted today, and out of that, we've almost, actually, not almost, but yes, we have completed 1 match for sure. But the 2 more matches are coming right back to back. The second match lobby is almost quite set as the players. They are just joining up one by one. Yeah, it will just take a few moments, maybe some few minutes, and we will be directly heading forward to the map of Miramar, the map of sand, the golden map with the golden Mirado. So I'm looking forward to what predictions can we just come up. As we talk about, the previous prediction was actually not right, but now when it comes down to the next map, I'm really thinking that what can actually happen, because it's the map of Miramar for sure, and Miramar has always been one of my favorite maps after Vikendi, if we talk about. But yes, Vikendi, as it is not included in this kind of pro scrims or in any kind of official events, so cannot actually count in Vikendi in this case. But definitely when it comes down to the map of Miramar, there's some sniper actions, some DMR actions we can get to see, as we are all quite accustomed with that. But for sure, when it comes down to the next part, I'm really looking forward that the next team will be coming up around the corners. We'll just see that if we have some kind of clashes, like we actually expected I8 versus Unicorns, any kind of clashes, but I8, after having a great start, they couldn't manage it up to end it up well, while Unicorns also comes up in the same flow, though they have a better match than I8, but not quite sure what's going to happen next. But for sure, it's a pro scrims, it's the very first match. Only the 1 match has been determined. 10 more matches are exactly in this entire event, so we are just coming up with the very first match. There are plenty more exciting events, there are plenty more exciting matches at the moment that we're really waiting to capture it out. But when we move on to the next part, I'm looking forward that what can we just actually get, what can we just actually expect, because I really suppose that something is different that can happen, because in the Wrangle map we have seen some kind of drop clashes, maybe in the military base side. That's what we have seen between I8 and ARB champions. But this time, which teams will be clashing with each other, and which teams will actually face some early casualties will be just popping up around our screen in a very short time, because almost the lobby is getting ready. As I mentioned earlier, the match will be just starting in just a blink of an eye, and as you know, the production team is also working very hard in the back end to just provide you up with some exciting stats that are coming. That's obviously the standings for sure, as well as the highlights that we are seeing after match, post-match highlights of every map that we are playing. So I really want to know, and the prediction that I'm going to see is that when you are seeing the entire match, what will be your prediction that which team can actually come up on the top and can just prevail over the top spot and can grab a really good place? So I can actually say that I can just get to say that there's a bit of chance that we can actually see maybe I8. There might be some chances, though I didn't have a really great match in the very first. So the next time we can also see Unicorns popping up around the corners. We can also see GK Esports as well. So we'll have to see the match 1. It's all over. We have seen one team dominating. On the other hand, Unicorns are they're warming up their gears, the engine. But the next 2 matches will be really important. The Miramar is just coming on this corner. The Miramar match, the map of DMRs, as well as some slow rotation with those vehicles. It will be really tough. The ridge fights will be there. Some Picado clashes, some San Martin drop location clashes. We will be looking forward to those kind of places for sure. But now, it's something that I'm really waiting for. It's that the drop clashes. In the previous match, as I mentioned earlier, it's I8 versus ARB champions. But will they clash again? Because in the third match, if it is again coming up in the map of Wrangle, we will definitely have a drop clash again in the military base. But this time, definitely I believe that the ARB champions will be just coming up and will try to just take a revenge against I8 Esports, because in the first match when you just eliminate us, we'll definitely try to come up on the top. But ladies and gentlemen, the second match is on the board as we move on to the map of Miramar, the map of sand. And the flight path starts from the areas of Puerto Parisiu, ends up in the trailer park. It's a completely diagonal flight path which actually
divides the entire northeastern and southwestern side of the entire map. But it's 17 teams, 67 players just trying to clash against each other. But we're going to talk about it's Team VP heading towards the areas of Puerto Paraíso. They do have a chance. They don't have a clash this time. Not any problems for their loot to Los Leones. We can actually get to see that I8 and the Team Doom. They're heading towards the area, while Team Doom will have a privilege over the southern side of the Los Leones. I8 will have the control over the areas of central part, while I believe that the squad of NEXUS, they're going on the northern part of the Los Leones alongside I8, though they might have a chance of getting the eastern side for sure. There are multiple drop clashes that will eventually happen. But for RM, they're having the areas of Impala. The circle has not been displayed yet, but we're just hoping that it will be coming up very soon. But RUTHLESS Esports is just going around the corners of Picardo. The southern side will be there in the corners. Nano Baby heading up, gliding around the corners, taking a split drop. Alongside, when you talk about ARB champions, Hamodi and the company, they're holding on to the sides. They are actually coming with some drop clash in the areas of Picardo alongside multiple teams, and the circle again comes up in the southwestern side, which will actually show us that what's the virtue, what's the area that we're looking forward to. But as of now, it's Team Death, those who on which we are actually looking up forward. It's Shera, Havan, as well as Harpy, who is just there alongside Nevin, will be there with them as well. They do need a good start from their side. It's the second match at Death Machine they are playing from their end. The first match was good, but Unicorns of Love, they have started off with a good note as they are just getting some multiple early openings against Team Red. Raid, actually, to be honest, as Crypto has been picked off, the other players are coming up. Well, Renzo might have just got a good amount of damage, but some pistol wouldn't be that much helpful as Crypto has got a revival. Reznov has to just fall back and get a good gun for his side, just to fall back or make some good retaliation shots. He's changed his position. His teammates might be coming up to just rescue him from this spot because Team Raid won't be dealing any kind of early casualties if they do have a chance to just defend it well. And they have got brilliant guns and ammunitions and utilities what they actually desire on the very early stage as compared to Unicorns. They do have a better loot. And if Unicorns just wants to take a fight at this stage, it will be really foolish of them because they can't actually take fight against those players with just pistols while they have the M249 as well as the other AR as well as SMG guns loaded on their bucket. But Modi as well as the company, 1766, the scoreline is just settling up. The Picardo area looks really prominent because two of the teams, ARB champions and Death Machine, last match, ARB champions lost the drop clash against Team I8. This time they are up against Death Machine. Will they be able to just cherish it out? Will they be able to just come up with some good moves or maybe some good chances that they can desire of? But definitely now it's the time. If they want to make a good move, it is the moment that they will have to. Because Death Machine, they're playing a bit split, that's for sure. One player will be in the split for sure. And they might be trying to just come up with some good notes, but definitely it's not the way that it actually can happen. It's GK Esports. When on the other hand, we talk about against QODEX, when GK Esports, they do have a one elimination lead in this match as well. But QODEX, all the players, it's Watson who has been taken down again and again. But when it comes down to the next part, is Pa maybe or something like that. It's really in a serious condition. While we talk about Stephen, he's very surviving. One more shot and he's a goner and he definitely goes down. Hope Sneed will get Stephen down and Hope will be confirming him down as well. And with that, Geek Esports also deals up with some early casualties as Easy goes down. He will be needing a revival as Gaeth and Ragnar will be closing up very shortly. Hope will be there in distant hell as Vito, he's just trying to close in. He's just trying to grab those finish points for sure. The need, it's completely on progress. But if that particular need can make a good connection, it will be really helpful. But like I would say that Vito
it's something that he can actually play a really, really good role. But no, he's not having any kind of elimination point. And after losing two of his brilliant teammates, it's a really, really bad spot to go aggressive, as VIT also goes down by the DMR shots of hope. And with that, GK Esports, they will be securing the third point of the day. While when we talk about, then it's just the position that we're looking forward to, because when it comes on the next part it's a bit clumsy, but there is only solo player. It's PNL who's surviving as a solo player for the side of QODEX, just trying to grab some good position points. But ARB weight 30 gets picked off by Death Machine, and with that, it's something that it's really, really tough for them. But for now, it's something that I'm looking forward to. But eventually, when you talk about these kind of circumstances, it's sometimes the Death Machine who might be blamed. But let's see what comes up next, because well, I would just not come up with any kind of plans. But I really believe that Death Machine, they're looking forward to grab some good kind of elimination points when they have got a good chance. ARB champions will be around the corners, and they're just trying to just go and get all the things in their pocket as soon as possible. But when it comes out to the next part, and maybe for the next aspect, as Share also goes down, and Avian will be the last and the solo player surviving from the side of Death Machine. But Death Machine, they're just coming up with some different kind of situations that they really don't want to face it out for sure. But when it comes down, it's something that I'm really, really looking forward to. But it's a triple POV screen. You can actually get it out. It's the Death Machine as well as ARB champions. They're just heading towards that particular position as they get the weight 30 down. Hamodi was in a really, really low HP. The first pick of the game, Death Machine got the second one as well. Vayne will be getting the second one, will be changing his position. Jamaz is down, and with that, Nevin will be getting confirmed. And the next player pops up. Vayne also gets diminished, and with this, ARB champions, they successfully defend their drop location. And the Picado, the Kings, it's their home right now. ARB champions secures all the four eliminations that they can actually acquire of this position, and they got it. They eradicated Death Machine from this drop. And on the other hand, when we talk about it's Reznov, who's just trying to grab and go away. Well, Team Raid, they're looking forward to just give out whatever the things they've got. But FTY Esports, on the other hand, they will be just coming out with split loots, just securing their vehicles, and will be trying to grab some good points. When it comes down to the next part, I really suppose that what's actually happening to the other teams, because RUTHLESS Esports, they have a good start. They do have a really, really good start in the very first match, but now it's something that I'm really, really looking forward that it's the second match, it's a variation of match, but oh, Salazari comes up with some brilliant Car98 shots. He gets a good connection for sure, and will definitely try to make some good retaliation again. He's barely surviving, because I really believe if that's a head connection, and if he's having a level 3 helmet, that's the only reason he's surviving. Otherwise, he was a goner. But the circle shift, it will be coming up and keeping the Chumasera area in the center. The circle again prevails over the southwestern side. Team Navi will be just coming exactly on the backside of RUTHLESS Esports. They have to be really, really persistent as well as attentive towards this kind of scenarios, because definitely if Team Navi anyhow manages to enter and backstab Team RUTHLESS Esports, it will be really, really blunderous situation for them. But as of now, it's I8 UZM who is just trying to make some good impact, and eliminations, if we talk about, only one elimination has been dealt, and it's AGONxI8 who's just heading towards that kind of scenarios. I really believe that this is going to be something really, really big and bomber, because the map of Miramar is looking really, really interesting, because we are seeing some twisters, some new faces, as well as some new contenders who are just trying to win this up. But when it comes down, Doom Frosty will be getting a one pick of the day, and with that, I really just gone up, and it's just going on and on. So
As of now, we can just get to say that GK Esports Hope is still surviving. All the 4 players and with all the 4 kill points, I really believe that just coming up in the same scenario. But when it comes down to the side of GK Esports, it's the different team, it's the different virtue. It's team number 9 as Robs goes down. But I really believe that okay. So on the public demand, हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि we will be coming exactly on the Hindi section. We will be switching the desk. We'll be switching the desk on Hindi because for the audience interaction हम इसको हिंदी में switch out करें and we are back changing English to Hindi and now जैसे जैसे हमारा मैच चल रहा है उसके ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा बिकॉज जीके ई स्पोर्ट्स की तरफ से जो मैचेस लाइक जिस तरीके से वो फाइट ले रहे 5 एलिमिनेशंस अभी तक एक्वायर किए गए हैं बट रैग्नार एंड होप 2 प्लेयर्स अभी के लिए नॉकआउट हो चुके हैं बैटल की बहुत ज्यादा जरूरत इजी क्लोजिंग करेंगे एज विक्टर उनके सामने तैयार है M4 उनके हाथ में रहेगा ही जस्ट क्लोजिंग विद दैट UMP एंड इसके साथ ये 1v1 इंपॉर्टेंट होने वाला इजी गेट्स हिम डाउन बट उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है जल्द से जल्द हील करना पड़ेगा सेकेंड सर्कल है उतना ज्यादा डैमेज तो नहीं होगा बट ठीक है चलेगा बट दिस 1v1 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था GK Esports के लिए बट साथ ही साथ अभी रिवाइवल की बात करी जाए होप एंड रैग्नार को बचाना इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़े से फ्लैंकिंग एंगल्स होल्ड अप किए जा रहे हैं गैट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनता जाएगा एज हम देख ही पा रहे हैं सिचुएशन थोड़े से वेरिएट कर रहे हैं बिकॉज गेम लॉट के प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन लाना चाहते हैं अपने गेम के ऊपर GK Esports के बाकी प्लेयर्स की बात करें होप को रिवाइवल मिल चुका है हील करेंगे जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े भी हो जाएंगे रैग्नार को इस बार थोड़ा सा मुश्किल शायद फेस करना पड़ सकता है बिकॉज फ्री जोन का भी डैमेज हो रहा है उनको बचाना शायद ही पॉसिबल हो पाएगा इसी के साथ साथ इस बार रैग्नार की कुर्बानी GK Esports को देनी पड़ी है I8 के घोस्ट आएंगे जहां पे EST के प्लेयर्स को परेशान किया जा रहा है टीम GK Esports 6 एलिमिनेशंस अपने नाम निकाल चुके हैं FTY Esports के जोडॉक्स की बात करें तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा अच्छा एंगल उनके लिए होल्ड अप किया जा रहा है बट डेफिनेटली व्हेन कम डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट अभी के लिए ये जो चीजें बदल रही है FTY जोडॉक्स जो अभी के लिए थोड़ा हाइट एंगल लाइक थोड़ा हायर ग्राउंड होल्ड करे जो उनके लिए उनकी टीम के लिए इन्फो गैदर करने के लिए एज वेल एज पिक्स निकालने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा बट कमिंग डाउन टू अदर टीम अगर हम देखते हैं थोड़ा सा यूनिकॉर्न्स ऑफ लव की टीम के ऊपर एक बहुत अच्छी टीम हम बार बार बोल रहे हैं क्रिप्टो जो कि पाकिस्तान रीजन से बिलोंग करते हैं बट ही इज रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट टीम फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन वो भी अपना पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं जबकि उनके ही एक्स टीममेट्स दैट इज I8 के प्लेयर्स आपको देखने मिलने वाले हैं नेक्सस की बात करें FTY के बिस्किट के द्वारा उनको पिक ऑफ किया जाएगा FTY के लिए मुश्किल हो सकता है बट नेक्सस के 2 प्लेयर्स डाउन किए गए हैं आखिरी प्लेयर यहाँ पे डोरीन बचने वाले बट डोरीन कितनी देर तक बच पाएंगे देखिए वो सबसे बड़ी बात आ जाती है बिकॉज फर्स्ट स्टेज उनके पास 2 है 15 बैंडेजेस 9 एनर्जी ड्रिंक्स एंड 2 पेन किलर्स है 3 नीट के साथ स्कारल का इस्तेमाल कर सकते हैं स्मोक करके व्हीकल बचाना मुझे नहीं लगता उतना कुछ अच्छा डिसीजन हो पाएगा बिकॉज ऑलरेडी उस व्हीकल से धुआं निकलना शुरू हो चुका है बट यंग यांग उनको यहाँ पे पिक ऑफ किया गया है यूनिकॉर्न्स ऑफ लव थोड़े से बैकफुट में नजर आ सकते हैं बिकॉज एक प्लेयर डाउन है रिवाइवल की जरूरत बहुत जल्द होने वाली है बिकॉज पीछे से आपको दूसरी टीम पधारती हुई नजर आएगी जो बेसिकतास ई-स्पोर्ट्स है एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ रियली रियली गुड मूव एंड यंग यांग की बात कर ही रहे एक एलिमिनेशन उनको मिलेगा 15 टीम बचे हुए 52 प्लेयर्स लॉबी के अंदर है क्रिप्टो आगे चार्ज इन करते हुए जॉय एग्जैक्टली सामने मौजूद नीट पिन आउट किया गया है एक अच्छा कनेक्शन निकल सकता है हल्का सा वेरिएशन हल्का सा चेंज ऑफ डायरेक्शन अगर होता है बट क्रिप्टो का नीड ऑन स्पॉट जाएगा स्प्लैश डैमेज जरूर से दिया है बट जो डैमेज उन्होंने दिया है वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा काबिलियत तारीफ है बट उसी के साथ साथ क्रिप्टो एक और नेट पुल अप करेंगे बेरली एंजॉय वहां पे सरवाइव कर रहे हैं क्रिप्टो को फुट स्टेप आया है ये नेट एक सही जगह गया है ओपनिंग यहाँ पे मिलेगा यूनिकॉर्न्स ऑफ लव के खिलाड़ी अभी थोड़े से फॉर्म में आते हुए क्रिप्टो के हाथ से ओपनिंग निकला है क्रिप्टो का काम करते हुए नॉर्मल अगर हम स्टॉक मार्केट के क्रिप्टो की बात कर ले कि चाहे हमारे गेम के दोनों ही अभी टॉप नॉच फॉर्म पे चल जरूर है बट इसी के साथ साथ DMR एक्शन मिनी 14 एंड UMP का कॉम्बिनेशन क्रिप्टो के लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है बट डैमेज बहुत ज्यादा डील कर चुका है क्रिप्टो गोज डाउन थोड़ा सा बैक स्टैप किया गया है टीम नंबर 19 के प्लेयर्स के द्वारा एंड वी कैन एक्चुअली से टीम रेड गलत टाइम पे एंट्री किया है फॉर द साइड ऑफ
यूनिकॉर्न्स ऑफ लव, बट इस बार 2 प्लेयर्स गंवाना यूनिकॉर्न्स ऑफ लव के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलदायक बन सकता है। रूथलेस esports के सालाजार क्लोजिंग करेंगे जरूर से, दिक्कत में जरूर डाला जाएगा कुछ प्लेयर्स को, बट डेफिनेटली रूथलेस esports जिस तरीके से अभी के लिए खेल रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हम ये कह रहे हैं कि EST जो टीम आपको यहां देखने मिलने वाले इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली ईस्टर्न स्टार्स जो आपको देखने मिल रहे हैं। ईस्टर्न स्टार्स के अगेंस्ट भी बहुत सारे फाइट अभी होने वाले की स्पोर्ट्स की नजर अभी के लिए रहने वाली है GL के ऊपर, जिसके अगेंस्ट अभी रूथलेस का फाइट चल रहा है, बिकॉज वो चलो इंपॉर्टेंट है। गैथ की नजर SKS के साथ है, सालाजार एक पिक ऑफ निकालेंगे जरूर। रैग्नार का लॉस जरूर से के स्पोर्ट्स को थोड़ा सा बैकफुट में नजर आ सकते हैं, बट रिटेलिएशन आएगा नाविट जी के द्वारा। ये शॉट गैथ को डाउन किया गया, इजी की एचपी थोड़ी बहुत कम रहेगी, दैट्स फॉर श्योर, नो प्रॉब्लम इन दैट। थोड़े बहुत स्मोक्स किए जाएंगे, थोड़े बहुत सिचुएशंस क्रिएट किए जाएंगे। 12 टीम 39 खिलाड़ी अभी भी इस मैच के अंदर जीवित। हम यहाँ पे एक्चुअली टीम रेट के लक्ष्य को डाउन करेंगे एंड उसी के साथ साथ सिचुएशन थोड़ी सी बदली जा रही है, थोड़ी सी प्रेशर क्रिएट की जा रही है बाकी ऑडियंस के ऊपर, बाकी प्लेयर्स के ऊपर। ऑडियंस बोल रहा हूँ, कभी कभी जज्बात में निकल जाता है, बट मेन थिंग दैट कम्स अप इन आवर माइंड दैट इज के स्पोर्ट्स की इजी वे 30 हमू एंड बाकी सारे खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयारी लेके आए हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम थोड़ा सा और चीज एफर्ट डालते हैं तो वी कैन एक्चुअली गेट टू सी AGONxI8 esports के खिलाड़ी रहेंगे। बट ARB चैंपियंस के जमाज ओपन से भागते हुए जा रहे हैं, सामने से यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड एंट्री ले रहे हैं, जो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा दिक्कतदायक जरूर बन सकता है। बस्सी यहाँ पे तैयार रहेंगे, बस्सी के द्वारा बस्सी के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स लिए जाएंगे जमाज के द्वारा। कनेक्शन कुछ उतना खास नहीं मिला, बट बजी गोज डाउन। जमास का ये पिक बहुत ज्यादा काम आता हुआ है, एक के बाद एक ईस्टर्न स्टार्स के जो सितारे हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। वेट 30 नैनो बेबी को पिक ऑफ करेंगे, बाजी को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया, कुछ बढ़िया एलिमिनेशन पॉइंट्स सिक्योर किया जा रहा है। जोडॉक्स तैयार है, उनको पता है कब कौन सी चीज सही से करनी चाहिए। हम मोडी की भी बात करें, बीजेके के प्लेयर्स को परेशान किया जा रहा है। टीम डोम दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन एंड उनको एलिमिनेट कर भी दिया जाएगा। बट इस बर्स्ट स्प्रे की अगर बात करें तो क्या ही करे, क्योंकि इस बर्स्ट के चलते I8 की IQ को जरूर डाउन किया गया। रिवाइव उनको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कवर उनके पास मौजूद है, उसका कोई भी दिक्कत उनको फेस करना पड़ेगा नहीं। बट डेफिनेटली 7 एलिमिनेशन के साथ ARB चैंपियंस अपना जो दौड़ है रूथलेस esports के ऊपर दिखा रहे, बिकॉज उनके अगेंस्ट 2 ओपनिंग मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा ओपनिंग बनता है किसी भी टीम के लिए, कभी भी चीजों कोई भी चीज के लिए टू बी ऑनेस्ट। बट ARB चैंपियंस पिछले मैच में खराब स्टार्ट हुआ था, अर्ली एलिमिनेशन फेस करना पड़ा था। इस मैच में एक बढ़िया गेम निकालने की पूरी कोशिश में है। रिवाइवल कंप्लीट किए जाएंगे, एक एक करके ओपनिंग भी निकाला जा रहा है, बेबी को शायद से डाउन किया जाएगा। वेट 30 एंड एक एक करके 9 टोटल एलिमिनेशंस अभी के लिए एक्वायर कर लिया गया है ARB चैंपियंस के द्वारा। लेकिन एक्चुअली से पोकू S9I के आपको एक खिलाड़ी जरूर देखने मिल रहा है, उनके साथ सालाजार भी रहेंगे। 2 खिलाड़ी रूथलेस esports के बाहर हो चुके, 2 एलिमिनेशन उनको मिला है। पर दूसरे एंड से मोडी भी थोड़े बहुत एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाल जरूर है। सालाजार आपको देखने मिल जाएंगे, हील बैटल करते हैं। जम्माज कितनी देर तक बच पाएंगे उसका कोई आइडिया नहीं है, बट फेथ उनको यहाँ पे डाउन किया गया है। ARB जम्माजिंग को भी यहाँ पे प्ले जोन से नॉकआउट किया गया है। इसी के साथ साथ ARB चैंपियंस भी शायद से हमें प्ले जोन से बाहर नॉक होते हुए एंड एलिमिनेट होते हुए नजर आ सकते हैं। 10 टोटल एलिमिनेशन इस टीम ने अभी तक निकाल लिया है। रूथलेस esports के खिलाड़ी के ऊपर अमोडी की अभी के लिए नेट की बरसात शुरू ही होने वाली है कि अगर ये कनेक्शन निकला तो एक बहुत बड़ा ओपनिंग मिल जाएगा। 2-1 रिवाइवल कंप्लीट हो चुका, बट एक जगह पे बहुत देर तक बैठे रहना ये बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। एंड अगर ये चीज होता है तो मुझे लगता है दिक्कत उनको बहुत ज्यादा होने वाली है। बट राइट नाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू जस्ट गेट अ होल्ड ऑफ दिस पोजीशन, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लिया जाए। बजाज ही ज्यादा अगर मोडी की बात करें, ओपनिंग क्रिएट करना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रूथलेस esports इस मैच से बाहर नहीं हुए इस वक्त तो ARB चैंपियंस के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है, बिकॉज जैसे ही वो सर्किल के अंदर जाएंगे ये टीम्स पीछे से आते हुए आपको देखने मिलेंगे, बैक स्टैप करेंगे, एक एक करके प्लेयर्स को पिक करेंगे और उनको बाहर कर दिया जा सकता है। वेल
we talk about नवीम क्यू, यहाँ पे जीके की इजी को पिक ऑफ करेंगे, FTY के बेस्के को यहाँ पे डाउन किया गया है, जीके इजी विल बी गेटिंग पिक्ड ऑफ अगेन, बट एक के बाद एक एलिमिनेशन जिस तरीके से फेस ऑफ किया जा रहा है, रूथलेस ई स्पोर्ट्स का सर्कल के अंदर एंट्री लेना बेहद बहुत ज्यादा मुश्किलदायक होने वाला है। हमोड़ी की नजर अभी रूथलेस के ऊपर, बट रूथलेस ई स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर, सर्कल के अंदर एंट्री के लिए ARB चैंपियंस के बाकी खिलाड़ियों को भी जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादा देर करोगे ज्यादा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एंड वेल आई डोंट थिंक कि अभी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सिचुएशन में, तो मुझे लगता है अभी ऐसे स्थितियों पे आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए एंड पे जोन के अंदर चले जाए, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। बट दूसरे एंड पे लेडीज एंड जेंटलमैन, आई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी अपना तहलका मचाना शुरू कर चुके हैं। ढिंडोरा पीट दो, क्योंकि अभी के लिए जिस तरीके से ये फाइट चल रहा है, क्योंकि आई स्पोर्ट्स ने ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पे ये मैच जीतने आए हैं, ये मैच हम जीत के ही जाएंगे। पिछले मैच में हमने 2 अर्ली कैजुअलिटीज डील की थी, जिसके वजह से हमारा जो पिछले मैच एंड फेज के जो मैच के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था उतना कुछ खास हो नहीं पाया था। इस मैच में कोशिश करेंगे कि उससे बेटर आउटपुट यहाँ पुट इन कर पाए। बट सबसे बड़ी बात है 7 एलिमिनेशन के साथ टीम नवी आपको नजर आ रहे हैं एंड ऑल द प्लेयर्स दे आर रियली ऑन द ट्रैक। IQ यहाँ पे आएंगे, ARB चैंपियंस के हमों को यहाँ पे डाउन किया जाएगा, फिनिश ऑफ किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम नजर आते हैं रोमानियन मीन, उनके अगेंस्ट पे यहाँ पे आपको वर्टस प्रो के खिलाड़ी देखने मिल जाएंगे एंड उसके साथ तोलेगा को यहाँ पे फिलहाल नॉकआउट किया गया, जो भी शायद एक बहुत बड़ा ओपनिंग क्रिएट हो सकता है। बट अंकी जो स्प्रे दे रहे हैं वो हल्का फुल्का डैमेज आ रहा है, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा मिला है एंड मुझे ये लग रहा है कि अभी के लिए 4 रोमन मैन के खिलाड़ी सोच रहे होंगे कि वो बचे तो बचे कैसे। वेल नवी वो सोचने से पहले एक एक करके एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए कलेक्ट करते जाएंगे, बट ज्यादा डिले करोगे तो ज्यादा ही यहाँ पे आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू बी रियली फास्ट एंड रियली प्रोमिनेंट। बट एट दिस वेरी पॉइंट 2 एलिमिनेशन के साथ वर्टस प्रो के खिलाड़ी जरूर से थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं। स्प्लैश डैमेज दिया जाएगा, इस बार तैयारी है, इस बार कुक किया जाएगा, बट अंकी हाथ में गन आने से पहले दिक्कत में जरूर पड़ेंगे, पहले ही डैमेज डील कर चुके हैं, तो उसके साथ यहाँ पे चीजें थोड़ी सी और ज्यादा बदल चुकी है। बट डेफिनेटली व्हेन वी कॉल आउट ऐसे सिचुएशन पे आपकी चीजें थोड़ी सी दिक्कत में आ सकती है। वेल नवी के प्लेयर्स की बात करें, नवी के प्लेयर्स भी अभी के लिए बहुत ज्यादा आउटस्टैंड कर रहे हैं। हर एक टीम को 8 एलिमिनेशंस निकाल चुकी है ये टीम, बट अभी तक एक भी प्लेयर इस मैच से बाहर नहीं हुआ है। तो हम ऐसे परफॉर्मेंसेस को ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा ऊंचा तगड़ा रोल देते हैं हमारे एस प्रो स्क्रिम्स के अंदर। बट जिस तरीके से नेड जा रहे हैं, अगर एक नेड सही जगह चला गया तो शायद से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 रोमानियन मेन के जो खिलाड़ी है उनको दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है। बट स्टिल एट्स का पहाला जो आपको देखने मिल रहा है टीम संसास की तरफ से नीड पिन किया जाएगा। अगर ये नीड कनेक्शन निकाला डेफिनेटली ये चीज बदल सकती है। EST देयर ऑन अ सिचुएशन दैट यहाँ पे चीजें कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में मुझे कह सकते हैं कि यहाँ पे बदल सकता है। बट एज ऑफ नाउ EST की टीम एलिमिनेट हो जाएगी। 4 रोमानियन मैन के खिलाड़ी के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स नवी के प्लेयर्स कंप्लीटली स्प्रेड आउट हो चुके हैं एंड अराउंड द कॉर्नर्स उनका जो कंट्रोल है वो बहुत बेहतरीन है एंड उसके ऊपर अगर थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट डाल के हम कर सके तो डेफिनेटली इट विल बी अ रियली बिग बॉम्बर। बट डेफिनेटली व्हेन इट कम डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट, नवी के खिलाड़ी जो है 11 टोटल एलिमिनेशन निकाल चुकी है ये टीम। 11 एलिमिनेशन निकालने के बावजूद इनको और ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स की जरूरत है। वाइल 4 रोमानियन मैन के राना प्लीज उनके बाहर यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए नजर आए हैं, एज वेल एज नवी में यहाँ पे आपको एक साल में वी कैन एक्चुअली गेट टू से कि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बदल सकती है। बट नवी की बात करें एक करके चीजें थोड़ी सी बदल रही है। 13 टोटल एलिमिनेशन तक वो पहुंच चुके हैं। यहाँ से वो थोड़ा सा टर्न अराउंड या कुछ टर्न ओवर करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि सर्कल उनके कंट्रोल में है। बट नाउ इट्स मैटिक जो एक और ओपनिंग निकालते हैं एंड एक के बाद एक ओपनिंग के चलते नवी के पास पूरा सर्कल का कंट्रोल है, पूरा एडवांटेज का कंट्रोल है, जिसका पूरा फायदा वो उठा भी सकते हैं। बट इसके साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन आखिरी खिलाड़ी VP के जो थे उनको भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। 15 टोटल एलिमिनेशन के साथ हमारे भाई इस मैच के विजेता जरूर बन चुके हैं टीम नवी, दैट इज आवर नाटस विंसर जिनको हम कहते हैं जरूर से। बट डेफिनेटली हम ये कहना चाहेंगे कि ये मैच जो था ये बहुत बढ़िया मैच था, एक बहुत बढ़िया मैच निकला भी। पर उसी के साथ साथ कुछ टीम्स ऊपर आए,
कुछ टीम्स उतने ऊपर नहीं आ पाए। i8 की बात करें, i8 की कंट्रीब्यूशन, i8 के फैंस इसलिए है क्योंकि i8 को देखना चाहते परफॉर्म करने के लिए, बट मैं उनके लिए भी थोड़ा सा कह दूं कि i8 का पहला मैच थोड़ा सा खराब गया था, सेकंड मैच थोड़ा सा बेटर गया, बट लेडीज एंड जेंटलमैन हम एक बार सीधा बढ़ेंगे अपने इस मैच के हाइलाइट्स के ऊपर, चेक करेंगे कि कुछ टॉप मोमेंट जो हमने इस मैच में काउंटर किया हो। स्टार्टिंग ऑफ यहाँ पे डेथ मशीन के साथ ये ड्रॉप क्लैश ARB चैंपियंस का, जहाँ पे बहुत ज्यादा मुंह तोड़ जवाब डेथ मशीन के प्लेयर्स के द्वारा दिया गया, जहाँ पे जरूर से ओवरपावर किया गया but till the very end, but definitely what a particular scenario it was। but उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट्स, बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग सीन्स एंड सिनेरियोस हमने कैप्चर भी किए हैं, जो ये 1v1 हो, लॉन्ग रेंज स्पेस, काउंटर, ट्रेड्स, व्हाटएवर इट इज। बट क्रिप्टो की बात करी जाए तो we can actually see that अभी के लिए थोड़ा सा चीजें जो है वो बदल सकती है। अभी सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस हुए, इसके बाद भी बहुत सारे मैचेस बाकी, ऑलमोस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ 9 मैचेस और बचे हुए हैं जो आपको देखने मिलने वाले हैं। टोटल 4 मैचेस कल, 4 मैचेस नेक्स्ट डे। बट उससे पहले हम एक बार नजर डालेंगे अभी के लिए मैच वाइज स्टैंडिंग्स के ऊपर, जो हमारा सेकंड होने वाला है NATUS विंसर कमिंग ऑन द टॉप, 30 टोटल अंक इस मैच से लेके जाएंगे, जहां पे सेकंड पोजीशन पे VPT आपको यहां देखने मिल जाने वाले टोटल 14 पॉइंट्स के साथ, FTY Esports 13 टोटल पॉइंट्स के साथ, i8 के पास रहेंगे 12 टोटल पॉइंट, ARB चैंपियंस के पास 12, 4RM के पास 11, 7 फॉर EST, 7 फॉर GK, 4 फॉर Ruthless Esports, 4 for Doom, 3 for BKJ, 2 for Raid, 2 for Unicorns of Love, 1 for GLD and 0 for QODEX, DM and NEXUS। एंड उसी के साथ साथ हमारा ये जो सेकेंड मैच का मैच रैंकिंग है वो यहाँ पे फिलहाल के लिए खत्म जरूर हो चुका है, बट उसके बाद हमारा जो मेन चीज है जिसके ऊपर हमारा थोड़ा सा फोकस रहेगा, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द ओवरऑल स्टैंडिंग्स। उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस रखे हुए, बिकॉज ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे हमें पता चल जाएगा कि आपकी जो भी टीम है, बीबी और संजन हो, वो कौन से पोजीशन पे अभी बैठे हुए, क्योंकि आपको जरूर से एक अंदर ही अंदर क्यूरियोसिटी चल रही होगी कि यार मेरा जो टीम है, मैं जो टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, चाहे वो i8 हो जाए, चाहे वो UOL हो जाए, चाहे कोई भी टीम हो जाए, आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो टीम अभी के लिए कौन से पोजीशन पे बैठे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आपको भी जानना है कि मेरी फेवरेट टीम कहाँ पे बैठी है। उसको आपको पता लगने के लिए हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो बैकएंड पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं अबाउट द पोस्ट मैच ओवरऑल स्टैंडिंग्स। पोस्ट मैच 2 है, ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बाद कैसा है, क्या हो रहा है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे जरूर से मिलेंगे। बट when it comes down to the next part, it's going to be another but the last match of the day। और उससे पहले हम एक बार जाएंगे ओवरऑल स्टैंडिंग्स के ऊपर, जिसमें सबसे ऊपर NATUS विंसर with 31 टोटल पॉइंट्स इन द लिस्ट। 2 मैचेस खेलने के बाद गेम लॉर्ड सेकंड पोजीशन पे 30, थर्ड पे टीम रेड with 23, फोर्थ पे यूनिकॉर्न्स ऑफ लव with 20, Ruthless Esports with 20, 19 for Virtus Pro, 17 for AGONxI8 ESPORTS एंड 16 के साथ ईस्टर्न स्टार्स की टीम आपको देखने जरूर मिल जाएंगे। कमिंग अप टू द नेक्स्ट चार्ट, आई रियली वांट टू सी दैट अभी के लिए जिस इस तरीके से सिचुएशन चल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकते हैं, बट इट्स जस्ट द डे वन। तो मूविंग ऑन टू द सेकंड चार्ट, वी कैन एक्चुअली हैव टू सी दैट 4 रोमानियन मेन इट्स इन द 9th। 10 में अभी के लिए हम देख सकते हैं आरबी चैंपियंस को, 11 पे FTY esports as well as 12 पे बेसिक्टास esports, 13 पे टीम डूम, 14 पे GK Sports, 15 पे QODEX as well as 16 पे डेथ मशीन। तो उसी के साथ ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात करी रहे तो ये हमारे मैच नंबर 2 के बाद, डे नंबर 1 के मैच नंबर 2 के बाद ये जो ओवरऑल स्टैंडिंग से वो बना है। बट उससे पहले अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद विद द वेरी लास्ट मैच ऑफ द डे। तब तक के लिए बने रहिए स्ट्रीम पे।
भाई और बहनों, स्वागत है आप सबका रूथलेस ई स्पोर्ट्स के प्रो स्क्रिम्स के अंदर। जो आपको सबको पता है कि यहाँ जो है कोई डेजिग्नेटेड रीजन एरिया का प्रो स्क्रिम्स नहीं हो रहा जो यूजुअली होता है। मे बी मिडल ईस्ट, मे बी साउथ ईस्ट एशिया, नहीं, यहाँ पे मिक्स्ड रीजन्स का हो रहा है जहाँ पे वेस्टर्न यूरोप, पाकिस्तान एज वेल एज टर्की एंड बहुत सारे और कंट्रीज यहाँ पे है, रीजन्स है जिसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो we'll have to see accordingly, but definitely जैसे हम देख पा रहे हैं चैट में थोड़ी देर पहले देख रहा था, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट है जी। बिल्कुल। मैं ना इंग्लिश कास्टिंग थोड़ा सीरियस हो रहा था, आपने डिमांड किया हिंदी करने के लिए। हमने जो है रूथलेस ई स्पोर्ट्स एज ऑलवेज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टॉक्स, ऑब्वियसली यहाँ पे अपने ऑडियंस को प्रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि लेट्स शिफ्ट टू हिंदी एंड जो शायद आपके लिए कंफर्टेबल होगा, एंड हमने वही किया, हमने हिंदी में स्विच किया। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी जो नेक्स्ट चीज होगी वो किस तरीके से टर्न अराउंड होगी, बिकॉज नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेरी लास्ट मैच जो सैनॉक के मैदान पे होगा। तो अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें चैट पे जो है, आप अपना प्रेडिक्शन देना शुरू कर दो, यही मोमेंट है, यही समय है, आप अपना प्रेडिक्शन डालना शुरू कर दो। एंड मैं मानता हूँ कि शायद अगर आप अभी दे दो, मैं देख रहा हूँ चैट में, थोड़ा बहुत बता दूंगा कि किसका प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा सही हुआ है या फिर हुआ था, कौन सी टीम जीतेगी ये सैनॉक का मैप, एंड कौन सी टीम इस दिन के अंत पे सबसे ऊपर फिनिश करेंगे, ये जरूर से एक बार चार्ट पे लिख के बता दो। एंड जो लोग बोल रहे कास्टर अच्छा है, कास्टिंग अच्छी हो रही है, नहीं हो रही, हाँ देखो, अच्छा बुरा जो भी हो, कुछ भी आपको गलत लगे, मेरा इंस्टाग्राम है फ्री, आप जाके कोई भी फीडबैक हो आप डिलीवर कर सकते हो। I'll definitely try to work on that। अगर आपको कास्टिंग अच्छा लगता है आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, IG.necros_, प्रोबेबली आपको डिस्क्रिप्शन पे भी शायद मिल जाएगा। अगर मिल जाता है इट्स ऑल गुड, आप देख सकते हो, अदरवाइज आप नेक्रोस ऐसे टाइप करो, मेरा सुंदर सा सुशील सा जो चेहरा है वो आपको आ जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, फॉलो कर सकते हो। बट कीपिंग द थिंग्स असाइड, अभी के लिए जो हमारा आखिरी मैच है जो शुरू होने वाला है, ये सैनॉक का मैदान होगा, मतलब सांपों का ये समंदर अभी के लिए भरने वाला है। बिकॉज हमें पता है सैनॉक के इस मैप के अंदर यहाँ पे जिस तरीके से आपको प्लेयर्स प्रोन डाउन होते नजर आते हैं, चारों तरफ लेटे पड़े रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कौन सा प्लेयर कब कहां से आ जाए। स्पेशली स्प्लिट्स की अगर बात करते हैं, आप कहीं भी चले जाओ सैनॉक के मैदान में, अगर आप स्प्लिट ड्रॉप ले रहे हो, स्प्लिट ड्रॉप में आपके लिए चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि दो टीम अगर एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्प्लिट ड्रॉप्स लेते हैं, डेफिनेटली 1v1 1v2 के सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें कोई ना कोई कैजुअलिटी सैनॉक के मैप पे आपको डील करना पड़ता है। इन दिस केस यही चीज फिर से लागू होगी इस बार भी। अर्ली कैजुअलिटीज, ड्रॉप क्लैशेस एज वेल एज अर्ली एलिमिनेशंस हमें बहुत सारे देखने मिलेंगे। कुछ टीम्स बहुत पहले एलिमिनेट हो जाएंगे, तो कुछ टीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे टिल द वेरी एंड फेज, बिकॉज अर्ली कैजुअलिटीज अगर आप फेस करते हो, अर्ली एलिमिनेशंस अगर आप फेस करते हो, तो आपको पॉइंट्स तो कम होंगे, अर्ली कैजुअलिटीज के चलते एंड सर्कल में बचना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ऐसे लॉबी में अगर आपके पास एंड सर्कल में चारों खिलाड़ी जीवित नहीं है, भैया जी मुश्किल तो बहुत ज्यादा होने वाला है अगर आपके पास चारों खिलाड़ी नहीं। बिकॉज चारों खिलाड़ी रहने के एक जो अच्छा फायदा है वो कि आप 4 डिफरेंट एंगल्स देख सकते हो, 4 डिफरेंट एंगल से आप इन्फो गैदर कर सकते हो, और उस इन्फो गैदर करने के बाद आप धीरे धीरे जो पिक्स निकालने की कोशिश है, आप अपने लिए एलिमिनेशंस या फिर एलिमिनेशंस कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो किल्स के रूप में। तो अगर वो चीज आपको करना है, यू एटलीस्ट नीड 4 प्लेयर्स, बिकॉज 4 प्लेयर रहेंगे आपके पास, 4 दिशा देखने के लिए रहेगा। अगर 2 प्लेयर रहेंगे, 1 प्लेयर रहेंगे, तो वो एक ही दिशा या 2 ही दिशाएं देख पाएगा। पीछे से कोई आ जाए, कोई दूसरे साइड से आ जाए, उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। बट देवी और संजनो, 10 सेकंड के इस काउंटडाउन के बाद हम आज के दिन के आखिरी मैच के ऊपर सीधा बढ़ेंगे, सीधा नजर डालेंगे। बट उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं फ्लाइट पाथ के ऊपर, कैंप पाथ से शुरू होता हुआ कांपो की तरफ ये डायगोनल फ्लाइट पाथ बनता हुआ, पूरी तरीके से ये फ्लाइट पाथ सेपरेट करता है हमारे इस मैप को नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न साइड पे। बट सबसे बड़ी बात क्या है, इस फ्लाइट पाथ के चलते किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये सैनॉक है। सैनॉक बहुत छोटा सा मैप है, जिनको पता नहीं है, जिनको पता नहीं होना चाहिए, सबको पता है जो भी यहाँ पे देख रहा है। अगर नहीं भी पता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये इतना छोटा मैप है, चाहे कितना भी दूर आपका ड्रॉप हो जाए, आप आराम से आपके ड्रॉप तक पहुंच जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन दैट केस अगर हम अभी देख पा रहे हैं, सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट अपने अपने ड्रॉप लेना शुरू कर चुके हैं। ड्रॉप क्लैशेस की बात करें, देयर इज डेफिनेटली वन
आफ्टर अनदर। बूट कैंप एक ऐसा जगह है जहां पे आपको क्लैशेस की कोई भी जो है मतलब क्वांटिटी कभी कम होती हुई नहीं दिखती। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बूट कैंप में एक ही टीम गई है। तो इस बार भी बूट कैंप में एक ड्रॉप क्लैश है जो कि मुझे लगता है GK esports के साथ एक दूसरी टीम रहेंगे, बट कौन रहेंगे वो देखने वाली बात है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी टीम नंबर 14 जो हमारे रहने वाले बेसिक्टास esports। बेसिक्टास esports ऑलरेडी रैगनार को डाउन कर चुके हैं, थोड़ा सा एपिक मोड में स्विच अप करके गए तो कोशिश करेंगे पिक्स निकाला जाए। M16 A4 एंड M762 उनके हाथ में है, रिलोड करेंगे, कोशिश करेंगे पोजीशन चेंज करने की, बट कितना ज्यादा कामयाब हो पाएंगे बिकॉज एक रिवाइवल देना पड़ेगा। एक नॉक निकाला भी गया है। जेसी इनको कांस्टेंट बेसिस पे जरूर डिलीवर करेंगे अपने टीममेट को, बिकॉज उनको भी पता है अगर इनको सही मौके पे गया तो चीजें डेफिनेटली थोड़ी सी बेटर होगी एंड होनी भी चाहिए। बट नेक्स्ट पार्ट It's the openings that are being created. Ragnar के HP कम हो चुके, गैथ को भी यहाँ पे नॉकआउट किया गया है। इजी होल्ड कर रहे हैं, Ragnar होल्ड कर रहे हैं। ये ड्रॉप क्लैश में GK esports के खिलाड़ी बहुत ज्यादा पीछे जाते हुए नजर आएंगे। 5 बैंडेजेस है इजी के पास, इतना मुश्किल इतना इजी होगा नहीं। इसके साथ साथ पलक झपकते It's none other than Beşiktaş Esports जो इस मैच को, इस पर्टिकुलर ड्रॉप क्लैश को एटलीस्ट यहाँ पे जीत के जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। एंड इस अच्छी शुरुआत के साथ 3 बेहतरीन एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने नाम निकालेंगे। दूसरी तरफ एक बार अगर हम नजर डालें तो दूसरे क्लैशेस भी जरूर होंगे। हमने देखा है टीम्स को स्प्लिट ड्रॉप लेते हुए, बट एक चीज अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं की है, दैट इज कि हर एक बार जो सर्किल बन रहा है इट्स जस्ट गोइंग ऑन टुवर्ड्स द साउथ वेस्टर्न साइड। साउथ वेस्टर्न साइड में हो रहा है और हर एक सर्किल में ही टीम्स को थोड़ा सा दिक्कत मोरलेस फेस करना पड़ रहा है, जो कि वेल हम कह सकते हैं उतना बेटर शायद नहीं होगा। बट रूथलेस ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी की बात करें, इस बार i8 के सामने आ चुके हैं। AGONxI8 के खिलाड़ी एग्जैक्ट सामने मौजूद रहेंगे। 3 खिलाड़ी घोस्ट, ब्लेड एज वेल एज IQ आपको नजर आएंगे। नानो बेबी रिस्क अगर लेते हैं यहाँ पे कुछ पिक्स लेने का, कन्वर्ट करने का, थोड़ा सा अग्रेसिव खेलने का, अगर वो सारे रिस्क वो लेते हैं इट विल बी अ रियली बोल्ड डिसीजन। बट आई रियली वांट टू सी कि चीजें किस तरीके से होती है। बट घोस्ट को स्पॉट किया जाएगा, इस बार नॉकआउट करेंगे, सीधा नॉक, सीधा फिनिश, एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करने की पूरी जो चाहत, पूरी जो कोशिश है वो बेशक चलेगी। लाइक वी कैन जस्ट से दैट पूरी तरीके से कोशिश उनकी तरफ से ही बनी रहेगी, बट घोस्ट का बचना यहाँ से शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर अगर सब कुछ सही चला या फिर सही रहा तो शायद चीजें थोड़ी सी बदल सकती है। बट नाउ इट्स द रूथलेस ई-स्पोर्ट्स। पोको ऑलरेडी इस मैच से बाहर हो चुके हैं। AGONxI8 के प्लेयर्स घोस्ट को आराम से रिवाइव दे देंगे, मुझे नहीं लगता उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फॉर नाउ। बट डेफिनेटली जब भी कुछ सिचुएशन खराब होता है AGONxI8 के खिलाड़ी भी अपनी तरफ से रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे। बट रूथलेस ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी रेडार के अंदर आ चुके हैं। यू कैन एक्चुअली गेट टू सी देम अराउंड द कॉर्नर्स। अभी एग्जैक्ट आपको मिनी मैप के अंदर वो देखने नहीं मिलेंगे, बट अभी जिस डिस्टेंस पे मुझे लग रहा है रूथलेस ई-स्पोर्ट्स के बाकी खिलाड़ी है वो जरूर से कवर फायर या तो रिटेलिएट कर पाएंगे। बट जैसे ही हम देखते हैं ब्लेड के द्वारा कुछ शॉट जाता है, he gets the first one down। नानो बेबी को नॉक किया गया है, शायद से एलिमिनेट भी कंप्लीटली कर दिया जा सकता है। वो देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या रहता है। अगर वो थोड़ा सा अग्रेस करना चाहते हैं इट्स ऑल अप टू दैट डिसीजन। बट 2 एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करने के बाद AGONxI8 के खिलाड़ी बेशक एक बेहतरीन स्टार्ट जो है वो ले चुके हैं। ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी था। 15 टीम 56 खिलाड़ी अभी भी इस मैच के अंदर जीवित। ईस्टर्न स्टार्स की बात करें अभी के लिए आपको देखने मिल ही जा रहे हैं। एंड आई रियली बिलीव दैट इस बार चीजें थोड़ी सी अगर बदल ले, उनके लिए एटलीस्ट थोड़ा सा शो फ्लो बदले तो शायद उनके लिए बेटर होगा। बिकॉज पिछले 2 मैचेस दे वर नॉट दैट बैड, बट इट वाज नॉट दैट लाइक बेस्ट और समथिंग जिसमें हम कह सकते हैं हाँ बहुत अच्छा मैच गया, ऐसा भी नहीं कह सकते। बट खराब थोड़ा बहुत तो मैं कहूँगा गया है। बिकॉज अगर आप टॉप 3 टॉप 5 में अपने आप को बाय द एंड ऑफ डे 1 फिनिश नहीं कर पाते तो वी कैन एक्चुअली से कि 3 मैचेस आपके उतने अच्छे नहीं गए जिसमें शायद आप अपने आप को टॉप पे देख पाए। घोस्ट अगेन उनको यहाँ पे पिक ऑफ किया गया, बट इस बार घोस्ट का बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। इसके साथ साथ AGONxI8 अपने लिए पहला एक कैजुअलिटी डील करेंगे। रूथलेस ई-स्पोर्ट्स ऑलरेडी 2 खिलाड़ी गवा चुके हैं। इस बार वो ये कोशिश करेंगे कि i8 के भी जाते जाते 2-3 खिलाड़ी अगर डाउन कर दिए जा सके। बिकॉज उलिसेस की एचपी कम है, डिसीजन यहाँ गलत लिया गया है। बट ब्लेड यहाँ पे नॉक हो जाएंगे सालाजार के नेट से। एज रूथलेस ई-स्पोर्ट्स i8 के खिलाड़ी को बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल रहे हैं। एंड
हम अगर कहें इस सिचुएशन पे चीजें जिस तरीके से बदल रही है, ये चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सारजान यहाँ पे बच के निकलने की कोशिश में, एक और शॉट आएगा, आईकू को डाउन किया गया है। i8 के खिलाड़ियों के लिए मुश्किल बढ़ती हुई, बिकॉज उज़म आपको थोड़ी से दूर में नजर जरूर आएंगे, बट यहां से कितना ज्यादा कवर प्रोफाइल प्रोवाइड कर पाएंगे, बिकॉज सालेजार ऑलरेडी कवर ले चुके हैं। उनके टीममेट उनके लिए इन्फो जरूर दे सकते हैं कि ये प्लेयर इसके पीछे खड़ा हुआ है, बट यहां से उज़म के लिए किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा कि वो यहां से एक या दो पिक निकाल पाए। अगर निकाल पाते हैं इट्स ऑल फाइन एंड वेल, अगर नहीं निकाल पाते व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके ऊपर अभी सब कुछ डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली रेडिक्स लग्जर को यहाँ पे डाउन किया गया डोम के प्लेयर्स के द्वारा। अभी एक अच्छा फाइट चलता हुआ, रेड के खिलाड़ी थोड़े से मुश्किल में मुझे जरूर लग रहे आ रहे हैं, बट इट्स आईक्यू जो मुझे लगता है धीरे धीरे ब्लीड आउट होने वाला है। बिकॉज देखिए यहाँ पे कोई चांस बनता ही नहीं कि वो कुछ भी चेंज कर सकते या फिर करने के चांसेस उनके लिए ज्यादा बढ़ेंगे। बट when we talk about in this kind of scenarios, अभी जिस तरीके से चीजें बदल रही है, FTY स्पोर्ट्स की भी बात करें तो एक एलिमिनेशन पॉइंट है बेस्के की, एचपी थोड़ी सी कम है, वो जरूर से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हील अप कर लेंगे। नवी के खिलाड़ी ऑलरेडी अपने आप को अच्छे पोजीशन पे एस्टैब्लिश कर चुके हैं। जिस तरीके से सिचुएशन बना है, जोडॉक्स ब्रिंग्स अप दैट ओपनिंग फायर। नवी के खिलाड़ियों के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। FTY स्पोर्ट्स के खिलाड़ी कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड अपने लिए जो जगह है बेहतर और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक कैजुअलिटी, एक ओपनिंग नवी के खिलाड़ियों के लिए आई माय बैड बहुत ज्यादा दिक्कतदायक बन सकता है। बिकॉज ऐसे स्टेज पे जहां पे आपको अपना जो हाइट एडवांटेज है उसको पूरी तरीके से सेव करना पड़ेगा, उस जगह पे आप एक ओपनिंग, वो भी एक ऐसे समय पे जहां आपको एक भी कैजुअलिटी नहीं डील करना है, वो जगह ले रहा है। उसके चलते अभी के लिए जो जगह है, मुझे लग रहा है FTY स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बहुत ज्यादा दबाव डालने वाले, बिकॉज डाउन द रिच आ चुके हैं। नवी के खिलाड़ी के लिए मुश्किल होगा, सेंटर का एरिया बहुत ज्यादा क्राउडेड हो चुका है। बस गेम लॉट के खिलाड़ी भी वहां पे आ चुके हैं। FTY के जूडॉक्स को यहाँ पे डाउन किया गया है, बिस्के तैयार रहेंगे जी के द्वारा यहाँ पे तो स्पेस आ सकते हैं। जी विल बी गेटिंग बिस्के डाउन एज वेल। जूडॉक्स बिस्के दो खिलाड़ी डाउन है, फातिद एज वेल एज रोगो। ये दो खिलाड़ी के ऊपर पूरा गेम डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो ये गेम मैनिपुलेट करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल लेंगे, बिकॉज यहाँ से निकलना रोगो के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। द फ्लैश ग्रेनेड्स आर बीइंग यूज्ड, तो शायद एक टिप्स एंड ट्रिक्स हो भी सकता है कुछ टीम के लिए जस्ट टू इनिशिएट अ गुड पुश। बट डेफिनेटली यहाँ पे रोगो की बात करें, कोशिश करें एफपी मोड में होल्ड करने के लिए, बट दूसरे एंड पे एक एक करके सारे प्लेयर्स एलिमिनेट किए जा रहे हैं। FTY स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी जे को डाउन करेंगे। फातो के नीड से ओपनिंग मिला जरूर, बट फातो को भी यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं बिस्कैन जोडॉक्स उनका रिवाइवल हो चुका है। गो रोगो ही गेट्स द सेकंड वन, एंड उसके साथ साथ एक बेहतरीन 1v2 निकालते हुए FTY स्पोर्ट्स यहाँ से टीम नाटस विंसर को कर देंगे बाहर। बट मुश्किल अभी भी बाकी है, बिकॉज यूनिकॉर्न्स ऑफ लव के खिलाड़ी वो यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आ चुके हैं। एक ऐसे समय पे आए जहां अभी FTY के खिलाड़ी अपने सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्टेट में, दो दे हैव अ चांस टू जस्ट रिटेलिएट, बट इसी के साथ साथ रोगो इतना ज्यादा रिटेलिएट कर पाएंगे? एक पॉइंट तो लेते ही जाएंगे। रोगो अपनी तैयारी करके आते हुए दूसरा ओपनिंग मिलेगा, बट उससे पहले कुछ करे रेंजो की तरफ से, एक रेजनॉव की तरफ से बेसिकली हम कहें तो एक अच्छा रिटेलिएशन ट्रेड आया। क्रिप्टो का लॉस जरूर है यहाँ पे, पर 4 एलिमिनेशन पॉइंट लेके यूनिकॉर्न्स ऑफ लव के खिलाड़ी अपने आगे फेज को कंटिन्यू जरूर से करना चाहेंगे। बट देखते देखते हमारा ये जो हम कह सकते हैं दूसरा फेज है सानॉक के मैप का, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे ही सही। डेफिनेटली बेसिकतास स्पोर्ट्स की बात करें, 2 खिलाड़ी बचे हैं, 4 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं। इस बार जो नजर है वो गेमिंग हम कह सकते हैं गेम लॉट के ऊपर रहेगा। एज गेम लॉट के खिलाड़ी जो है हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है। एज वेट 330 इफ यू टॉक अबाउट सिचुएशन में थोड़े से दबाव में है, बिकॉज ऑलरेडी नॉकड आउट किए गए हैं। मोलोटॉव से फिनिशिंग टच देने के लिए अभी बस बैठे इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ वेट 30 का जो एलिमिनेशन पॉइंट है वो सिक्योर कर लिया जाएगा। इट्स फॉर रोमानियन मेन, जिनके खाते में अभी 2 एलिमिनेशन पॉइंट जरूर से गए हैं। बट डेफिनेटली हम कह सकते हैं सिचुएशन पे ARB चैंपियंस भी दिक्कत में आ रहे हैं। हमो को भी डाउन किया गया है बहुत दूर से,
एंड्रे का ये स्प्रे हमो को पिक ऑफ किया गया है। ARB चैंपियंस बहुत ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे राणा क्लोज इन करेंगे। स्प्रे गया है, कनेक्शन निकला है यार, रान ओवर करने की कोशिश बट हमोडी नॉकआउट करेंगे। दूसरे प्लेयर को भी स्पॉट किया गया, रिटायरेशन ट्रेड आएगा जरूर से बट हमोडी गोज डाउन, ही गोज डाउन फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एंड उसके साथ साथ ARB चैंपियंस को पूरी तरीके से कॉर्नर आउट करते हुए सर्कल के साउथ ईस्टर्न साइड पे चीजें बदल रही है, चीजें बदलती जाएगी भी। बट जम्मा यहाँ पे अपनी आखिरी सांसें तक ये मैच, ये फाइट निकालने की पूरी कोशिश में थे। दो प्लेयर्स यहाँ पे नॉक किए गए थे जरूर, बट फिर भी रिवाइवल मिल जाएगा जिसके साथ हम कह सकते हैं दैट 4 रोमानियन मैन अपने लिए शुरुआत जरूर अच्छा कर चुके हैं। नेक्सस के खिलाड़ी अभी के लिए थोड़े बहुत शॉट्स लेते हुए कनेक्शन निकालने की कोशिश। यूनिकॉर्न्स ऑफ लव क्या यहाँ पे कुछ रिटालिएट कर पाएंगे? क्रिप्टो की एलिमिनेशन के बाद एक बहुत बड़ा झटका जरूर से उनको लगा है, इस झटके से अपने आप को बाहर निकालना देखिए सबसे बड़ी बात है। अगर आप निकाल पाते हो सही समय पे, अगर निकाल पाते हो, ये आपके लिए भी बेटर जरूर होता है। नेक्सस के खिलाड़ी की बात करें, यहाँ पे उन्होंने भी एक खिलाड़ी गवाया है, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू द नेक्स्ट साइड इट्स गेम लॉर्ड जो इस मैच से एक टाटा बाय बाय सिया एंड आज के लिए अलविदा कहते हुए आपको नजर आएंगे। इस आखिरी मैच के अंदर सानों का मैप उतना कुछ खास गया नहीं है, 10वें पैदान पे यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए नजर जरूर आए हैं हमारे यहाँ पे गेम लॉर्ड की टीम। बट दूसरे एंड पे अगर हम थोड़ा सा बेशिकताश ई-स्पोर्ट्स की बात करें, अभी भी पेका लाइक पीस एज वेल एज जेसी दो खिलाड़ी बचे हुए हैं। नाउ इट्स कमिंग अप अराउंड द कॉर्नर्स बिकॉज यूनिकॉर्न्स ऑफ लव के खिलाड़ी को भी मैं देख पा रहा हूँ कि सर्किल के अंदर एक अच्छा पोजीशन ले रहे। रेजनोव एज वेल एज गोंजो के लिए अभी एक अच्छा पोजीशन एस्टैब्लिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लाइक बेटर देन आई वुड से यंग यांग, बिकॉज यंग यांग अगर थोड़ा सा होल्ड करके जाए तो मुझे लगता है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि वो थोड़ा सा बैकस्टैब कर सकते हैं। कुछ टीम जो शायद से यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट जो लाइक यूनिकॉर्न्स ऑफ लव के खिलाड़ी को चीज आप कर रहे हैं पीछे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, इस मौके पे हम कह सकते हैं कि एक चांस हो सकता है कि आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए एंड आप वहां से बैकस्टैब करके सारे फिनिश पॉइंट्स निकाल सकते हैं। नेक्सस के ऑक्टावियन की बात करें, alongside you can also get to see Orion and Ra, तो रे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट रे आप अगर यहाँ पे देखने मिल ही जाए तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक सम गुड कनेक्शन। बट रेंज लाइक इफ यू टॉक अबाउट रेजनॉव को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश किया गया। नेक्सस के खिलाड़ी जरूर से कुछ अच्छा कनेक्शन निकालते हुए 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले गए हैं। 9 टीम 25 खिलाड़ी अभी भी इस मैच में जीवित है एंड मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि नेक्सस कुछ भी करे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ दे रहे हैं एंड विच इज नॉट समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज ऐसे ही अगर चीजें चलते रहे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिचुएशंस यहाँ पे ऐसे खड़े होंगे जहाँ पे नेक्सस शायद से अपने आप को ज्यादा ऊपर लेके आ पाए। अगर लेके आ पाए इट्स ऑल फाइन, बट अगर नहीं ले पाए या फिर सही तरीके से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए अपने आप को, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर श्योर। पर देखने वाली बात है कि चीजें किस तरीके से होती है, किस तरीके से चलने वाली, बिकॉज नेक्सस के खिलाड़ी तैयार है। 3 एलिमिनेशन निकाले गए, 9 टीम 25 खिलाड़ी अभी भी जीवित है। उसी के साथ नेक्सस जोरियन का ये नीड केसी को यहाँ पे जेसी को एक्चुअली डाउन करते हुआ नजर आएगा एंड उसी के साथ साथ बेशिकताश ई-स्पोर्ट्स मुश्किल में नजर आ रहे हैं। दूसरा नीड जाएगा, स्प्लैश डैमेज जरूर से दिया है। एलिमिनेट प्रॉपर्ली करने के लिए भैया आपको थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा एंड शायद आपका काम यहाँ पे हो भी जाए। अगर हो जाता है तो ये सही है, वरना यहाँ पे 4 RM के जो स्क्वाड है अगर हम उनके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं, रोमानियन मैन वो भी टीम रेड के साथ फाइट में आ रहे हैं। बट डेथ मशीन की जो स्क्वाड है वो एकमात्र टीम होने वाली है जो सर्किल के अंदर अभी के लिए अपना जगह बना चुके हैं। नेक्सस के खिलाड़ी सर्किल के बाहर कोशिश करेंगे क्लोजिंग करने के लिए। 9 टीम 24 खिलाड़ी अभी भी जीवित जरूर है, बट 4 रोमानियन मैन की बात करें, वेल द सिचुएशंस आर टर्निंग अप दिस वे ओनली बिकॉज अभी मुझे लगता है सिचुएशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है कुछ टीम के लिए। 6 एलिमिनेशन अभी के लिए देखा जाए 4 रोमानियन मैन के द्वारा सिक्योर कर लिया गया, कोई भी प्लेयर का कैजुअलिटी नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। चौथा सर्किल अभी चल रहा है, आज के दिन का तीसरा मैच डे 1 रोमांच के साथ शुरू हुआ है। नवी की टीम ऑलरेडी अपने सितारे चमकाते हुए सबसे ऊपर बैठे हैं, बट उस सितारों को गिराने के लिए क्या कोई एक बड़ा सा सितारा उन कई सारे सितारों के अंदर अपनी जगह बना सकता है? अगर करता है तो डे 1 के अंत पे शायद हमें वो देखने मिल जाए। बट वेल लुक एट द सरप्राइज बिकॉज ईस्टर्न स्टार्स के खिलाड़ी इस वर्टस प्रो के खिलाड़ियों को परेशान कर रहे हैं एज तुलिका ही गोज डाउन।
यंग की आपको पीछे जरूर देखने मिलने वाले हैं, कौर का भी पीछे रहेंगे, स्मोक किया गया है तो लेका को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अभी then we can actually say that Eastern Stars के कापहाला को यहाँ पे डाउन किया गया, फ्यूरी को भी जरूर से नॉकआउट किया गया। किमी being that solo player surviving from their side, I really don't think कि इतना ज्यादा possibilities I hope आएगा, but he's still trying his level best as एक प्लेयर को डाउन किया, सीधा फिनिश ऑफ करने की कोशिश एंड वर्टस प्रो के खिलाड़ी जरूर से थोड़ा सा तहलका मचाने की कोशिश में कि किमी का पोजीशन है वो कंप्लीटली लाइक वी कैन जस्ट से दैट एक्सपोज तो हो ही चुका है, ज्यादा वक्त लगने नहीं वाला। फ्री फायर के अंदर आगे एक और प्लेयर को डाउन करें, बट दूसरा जो एचपी बचा है किमी, अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते, ज्यादा वेट करोगे भुगतना आपको पड़ेगा। फ्री फायर के अंदर आएंगे 1v4 निकालते हुए ईस्टर्न स्टार्स के किमी, he gets the 1v4 in his favor एंड उसी के साथ साथ ईस्टर्न स्टार्स की उम्मीदें यहाँ पे कायम रहेगी इस फाइट के अंदर। है उसके साथ साथ टीम को एंटायरली यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है, which is going to be Virtus Pro, a big blow to their side, क्योंकि एक लौता खिलाड़ी 1v4 क्लच करके चला गया। वर्टस प्रो इस मैच से बाहर होते हुए नजर आएंगे एंड when it comes down to this kind of scenarios, I really believe that it's something that I'm really looking forward to because ये एक बहुत important fight होने वाला है because it's something like 4 Romanian men अभी के लिए तैयार है, उनके एग्जैक्ट सामने डेथ मशीन की स्क्वाड तैयार रहेंगे। 4 रोमानियन मैन की बात करें 6 एलिमिनेशंस निकालने के बाद अभी जो पोजीशन पे अपने आप को रख चुके हैं, इसके बाद भी बहुत सारे एलिमिनेशंस वो सिक्योर कर सकते हैं। हाउ आर दे गोइंग टू डू इट वो मुझे पता नहीं, बट चांसेस उनके लिए बहुत ज्यादा होने वाला है। सर्किल के सेंटर की बात करें, यूनिकॉर्न्स की टीम आपको नजर आएगी, रूइंस के साइड में उसी तरफ से नेक्सस की 2 खिलाड़ी दैट इज डोरियन एज वेल एज ऑक्टेवियन भी क्लोजिंग करते हुए आएंगे। डेथ मशीन की स्क्वाड की बात करें, अराउंड द कॉर्नर्स अपने लिए नॉर्दर्न साइड का कंट्रोल होल्ड कर चुके हैं। यूनिकॉर्न्स आएंगे सर्किल के अंदर एंट्री लेते हुए, बट डेथ मशीन के अगेंस्ट अगर वो फाइट लेना चाहते हैं दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल बिकॉज 2v2 2v3 कुछ भी सिचुएशन हो, आई रियली बिलीव 2v3 एक्चुअली बिकॉज यूनिकॉर्न्स के 2 खिलाड़ी बचे, बट अगर यूनिकॉर्न्स यहाँ पे डेथ मशीन के प्लेयर्स के द्वारा स्पॉट कर लिए गए, ये उनके लिए एक बहुत अलार्मिंग स्टेट बन सकता है। बट मोर और लेस अगर हम बात करते हैं i8 के खिलाड़ी उज़म अभी भी हील बैटल करते हुए, डीबीएस उनके पास है, सर्किल का डैमेज लेते हुए सर्किल के अंदर घुसने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे चिकन लेने का कोई इरादा नहीं है। जितना हो सके पॉइंट्स कलेक्ट करना अभी इल्यूमिनेट की टीम के लिए एम रहेगा इस मैच के अंदर। सो वेल वी हैव टू सी इट अराउंड। बट यूनिकॉर्न्स के खिलाड़ी की बात करें, गोंजो एज वेल एज यांग की बात करें, 2 खिलाड़ी बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड करते हैं, बट इट्स समथिंग दैट फॉर रोमानियन मैन के ऊपर थोड़ा सा ये नजर रखना पड़ेगा रियली बेनिफिशियल बिकॉज नेवेन उनको नॉक किया गया, फिनिश किया जाएगा 4RM के अलावा आई के द्वारा। एक ओपनिंग जो चाहिए था वो मिला है, 7वां एलिमिनेशन आ सकता है, बट ट्रैकेट को यहाँ से उनको रिवाइव देना पड़ेगा। ऐसी जगह पे नॉक हुआ है कि रिवाइव मिल सकता है, सर्कल के अंदर है, बट अगर वहां पे गए रिस्क हो सकता है कि वो आप वापस लौट के ना हो। डेथ मशीन के हार भी उसको पूरी तरीके से इंश्योर करते हुए बिकॉज रैकेट एज वेल एज अलवाई ये 2 खिलाड़ी जो नॉक हुए हैं, इसके बाद एंड्रे एज वेल एज राना, इन दोनों के ऊपर थोड़ा प्रेशर जरूर से पड़ने वाला है। 4 रोमानियन मैन की बात करें, सर्कल के अंदर घुसना, ईस्टर्न स्टार्स के खिलाड़ियों को परेशान करना, अभी ये काम उनके ऊपर है, बट उसके अंदर बाधा डालने वाली कोई टीम है तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी यूनिकॉर्न्स एज वेल एज नेक्सस। बट साथ ही साथ जो फाइट चल रहा है, अंधेरी की बात करें, एंड्रे की बात करें, एंड्रे आपको फिलहाल रिवाइव कंप्लीट कर ही देंगे, बट 5 एलिमिनेशंस के बाद नेक्सस यहाँ से कितना ज्यादा लेके जा पाएंगे मुझे पता नहीं, बट उज़म विल बी गेटिंग कंफर्म फ्रॉम साइड ऑफ 4 रोमानियन मैन एंड 7वां एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट, आई रियली बिलीव दैट ईस्टर्न स्टार्स, उसी के साथ साथ यहाँ पे सारी चीजें खत्म किया जाए। बट 4 रोमानियन मैन की बात ही कुछ अभी अलग है बिकॉज वो भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि क्या चीजें होने वाली, बिकॉज सर्कल के अंदर भी एंट्री लेना है। 6 टीम 13 खिलाड़ी बचे हुए हैं एंड इन 13 खिलाड़ियों में से बस चुनिंदे कुछ 4-5 खिलाड़ी ही रहेंगे जो शायद से ही यहाँ पे सबसे ऊपर जाने वाला है। बट डेफिनेटली देखिए कोशिश करनी चाहिए एंड वो कोशिश जो करता है उसका कभी हार होता नहीं है। वेल गोंजो की बात करते आ रहे हैं, बट अलवाई को नॉकआउट किया गया है।
एंड इस बार एंड्रे को भी प्ले जोन से एलिमिनेट कर दिया गया। इसके साथ साथ प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है गोंजो के ऊपर, प्रेशर रहेगा यूनिकॉर्न्स के खिलाड़ी के ऊपर। इस बार क्लोज इन किया गया। आरपी विल बी चेकिंग अराउंड द कॉर्नर, स्पीड फाइट देते हुए घुसेंगे। सर्कल का डैमेज हल्का फुल्का रखेगा। गोंजो तैयार, प्लेयर तैयार, 1v1 लिया जाएगा। एक नॉकआउट निकालेंगे, दूसरा निकाल सकते हैं, दूसरा भी निकालेंगे। गोंजो वो तैयार है इस बार यूनिकॉर्न्स की तरफ से ये मैच, ये फाइट निकालने के लिए। दूसरे एंड पे यंग यांग नॉकआउट हुए हैं, जिसके चलते सिचुएशन बदल चुकी है। बट डोरिन का एंट्री अगर यहाँ होता है, गोंजो का मूव क्या होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली यंग यांग का रिवाइवल मुश्किल रहेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा गोंजो के लिए। यहाँ पे अकेले फाइट निकालना बेशक मुश्किलदायक है। सही मौके पे यंग यांग का टच करना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज रिवाइव अगर हो जाए मैन एडवांटेज मेंटेन रहेगा टिल द वेरी एंड। यूनिकॉर्न्स कोशिश करेंगे इस मैच को निकाल के लेके जाने के लिए। सो डज ईस्टर्न स्टार्स एज वेल। एंड दूसरे साइड पे रीड एंड ऑल, आई रियली बिलीव वो हील बैटल के लिए जा रहे हैं, जो कि शायद उनके लिए बचा हो सकता है। बट नाउ इट्स समथिंग दैट मुझे लगता है सर डिफरेंट चीजें, शायद से चीजें बदल सकती है। बट वेल 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 गोंजो एक नेट से 2 शिकार। विन एंड आरपी हुए नॉक। नेविन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए पीछे। रेड की कोशिश का ऑलमोस्ट उनका जो हीलिंग है मुझे लग रहा है खत्म होने को आया है। बट नेविन इस मौके पे जिस तरीके से वो रिवाइवल का टच ले चुके हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। जंप किया जाएगा सही मौके पे, क्लोज इन करेंगे। एक प्लेयर डाउन, दूसरे प्लेयर को डाउन करने चांसेस होगा, बट नहीं, डिनाई करेंगे इस बैट को। डाइवर्जन क्रिएट किया गया सही मौके पे, रिवाइव होने का फायदा नेविन उठाते हुए ऐसा यूनिकॉर्न्स ऑफ लव इस मैच से लेंगे एलिमिनेशन। 5वें पायदान पे डेथ मशीन अभी अपने आप को कड़क रखते हुए। रेड की अगर शिका की बात करें, सर्कल के अंदर घुसेंगे, घुसते ही शायद पनिश किए जाएंगे। जी बिल्कुल पनिश तो किया जाएगा राणा के द्वारा। 3 खिलाड़ी, ईस्टर्न स्टार्स, डेथ मशीन वर्सेस 4 रोमानियन मैन। कौन लेके जाएगा आज के दिन का आखिरी विनर चिकन डिनर, वो जरूर से देखने वाली बात है। बट मोर और लेस विद द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि अभी के लिए ईस्टर्न स्टार्स के खिलाड़ी थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट करना चाहेंगे। 9 एलिमिनेशंस निकाल चुके हैं, 4 खिलाड़ी रहेंगे। एज वी कैन से दैट 4 रोमानियन मैन को इस मैच से बाहर कर दिया गया है। उसके साथ साथ रिप्लाई हमारे सामने है, एग्जैक्ट पीओवी, एग्जैक्ट स्क्रीनिंग एंड एवरीथिंग विल बी प्रॉपर ऑन द स्क्रीन। बट सबसे बड़ी बात है कि अभी अगर हम थोड़ा सा भी मुश्किल में पड़ते हैं तो शायद से पढ़ सकते हैं। बट इट्स समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, इट्स समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज इट्स डेथ मशीन वर्सेस ईस्टर्न स्टार्स। नेविन यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है शॉट जाएगा, केविन गोज डाउन। पहला ओपनिंग मिलता हुआ डेथ स्पोर्ट्स डेथ मशीन के खिलाड़ी थोड़ा सा रिटेलिएट करने की कोशिश में, हार्पी को बचाना। हार्पी यहाँ पे बचा तो नहीं पाए नेविन को, बट इस बार जिस तरीके से ये रशन आ रहा है उनके लिए होल्ड करना भी जरूरी मुश्किलदायक होगा। 1v1 लेना पड़ेगा, एक प्लेयर को डाउन करना पड़ेगा, एक प्लेयर डाउन हो भी जाएंगे। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल 1v1 फॉर दिस साइड ऑफ डेथ मशीन एज वेल एज फॉर द साइड ऑफ ईस्टर्न स्टार्स। यहाँ पे क्लोजा का इस्तेमाल किया जाएगा, कनेक्शन कुछ खास नहीं निकला है। एंड विद दैट we can say the winner chicken dinner goes up in the hands of कौन गया बताओ, मैं अभी नहीं बताऊंगा, अगर आप बताओगे चैट में शायद देखने से पहले, बिकॉज डिले है, सो आई डोंट थिंक वी गोइंग टू गेट इट, बट इट्स गोइंग टू बी डेथ मशीन, जो मुझे लग रहा है लेके गए हैं ये आखिरी पर्टिकुलर 1v1, बिकॉज पीछे जब ईस्टर्न स्टार्स के खिलाड़ी आ रहे थे मुश्किल में थे। बट विद दैट व्हेन वी टॉक अबाउट हाइलाइट्स, हमारा जो है हमारे इस मैच के की मोमेंट्स है वो भी ऑलरेडी मुझे लग रहा है प्रोसेस हो चुके हैं, हमारे सामने कुछ देर में आ जाएंगे। बट ये जो मोमेंट था, ये 1v2 जो आखिर में करके गए, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं डेथ मशीन कुछ तो कुक हो रहा है, एंड वो कुकिंग शायद अभी के लिए तैयार हो भी चुका है। नाउ वी दे आर फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट फेज। डे 1 का अंत हम कह सकते हैं जरूर से उनके लिए अच्छा है, बट आप लोग कहीं मत जाइएगा, बिकॉज ओवरऑल स्टैंडिंग्स, मैच वाइज स्टैंडिंग्स, हाइलाइट्स सब कुछ है। शुरुआत करेंगे हाइलाइट से, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हाइलाइट्स के साथ। हाइलाइट्स की बात कर ही रहे तो बूट कैंप के अंदर हमारी जो पार्टी चलती है वो पार्टी अभी यहाँ पे हो भी रही है, हो भी गई थी, कि जहाँ पे थोड़ा सा अर्ली एलिमिनेशन कुछ एक टीम को फेस करना पड़ा था, जो कि एक हर बूट कैंप की कहानी है। एंड उस हर बूट कैंप की कहानी के अंदर ट्विस्टर्स जो है वो कुछ और टीम लाते थर्ड पार्टी करके, बट इस बार लकीली थर्ड पार्टी हुआ नहीं था। बट ये जो फाइट यहाँ पे सालजार ने निकाला था वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ था। FTY स्पोर्ट्स के भी खिलाड़ी के पास बहुत अच्छा एडवांटेज था, बट गलत मौके पे यूनिकॉर्न्स ने यहाँ थर्ड पार्टी कर दिया, वरना शायद से ये फाइट तो इजी FTY का ही था। अगर यूनिकॉर्न्स नहीं आते
तो शायद से चीजें बदल सकती थी। बट डेफिनेटली रोगो का जो पूरा स्टाइल था, इट वाज रियली रियली मेस्मराइजिंग। बट डेफिनेटली ऑन द अदर हैंड, जिस तरीके से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई है या हो रही है, रोगो को भी यहाँ पे पिक ऑफ किया गया, बिकॉज यूनिकॉर्न्स डेफिनेटली won't even try to compromise for a little bit of time. But डेफिनेटली के साथ साथ अगर हम ARB चैंपियंस की बात कर ही रहे, इट्स लाइक हम अगर क्या कहे तो बहुत सारे टीम ने यहाँ परफॉर्म किया है, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी निकले। बट डेफिनेटली हम एक बार नजर डालेंगे हमारे मैच वाइज स्टैंडिंग्स के ऊपर, देखेंगे इस मैच में जो टीम है दैट इज डेफिनेटली आवर डेथ मशीन, उनके पास अभी के लिए टोटल 22 पॉइंट गए हैं। ईस्टर्न स्टार्स के पास वही 22 पॉइंट रहेंगे, 4 रोमानियन मैन के पास भी यहाँ पे 18 पॉइंट रहेंगे। साथ ही साथ यूनिकॉर्न्स ऑफ लव माय बैड, यहाँ पे 11 टोटल पॉइंट लेके गए हैं। टीम रेड 9 पॉइंट के साथ, नेक्सस 9 पॉइंट, 8 पॉइंट रहेगा यहाँ पे बेसिकतास ई-स्पोर्ट्स के लिए, i8 के पास 5, एंड उसके साथ FTY ई-स्पोर्ट्स के पास भी 4 पॉइंट। दूसरे एंड पे #10 पे वी कैन एक्चुअली गेट टू सी दैट गेम लॉर्ड की अगर बात करें 3 पॉइंट उनको मिला है। साथ ही साथ वर्टस प्रो 3 पॉइंट, टीम डूम 3 पॉइंट, रूथलेस ई-स्पोर्ट्स 3 पॉइंट, 1 पॉइंट फॉर ARB चैंपियंस एंड नवी गीके एंड कोडेक्स। यहाँ पे उनको कोई भी पॉइंट रिवॉर्ड नहीं किया गया। बट रिवॉर्ड नहीं किया गया मतलब ऐसा नहीं कि ओवरऑल स्टैंडिंग्स में कोई इम्पैक्ट नहीं डाला है, उन्होंने जरूर से कुछ ना कुछ ओवरऑल स्टैंडिंग्स में भी डाला है, कुछ ना कुछ अप डाउन इम्पैक्ट उनकी तरफ से भी हुआ है, क्योंकि कभी कभी एक मैच आपका अच्छा जाता है, कभी कभी एक मैच आपका नहीं जाता है, तो दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। सो आई कैन एक्चुअली सी दैट कि अभी इस सिनेरियो के चलते इट विल बी समथिंग जो मुझे लगता है कि मे बी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल स्टैंडिंग्स में कुछ चेंजेस जिस तरीके से होंगे, बिकॉज नवी वाज देयर ऑन द #1 स्पॉट आफ्टर द एंड ऑफ डे 2, सॉरी मैच नंबर 2। तो डे 1 के अंत पे कौन सी टीम हो सकती है, बिकॉज डेफिनेटली इट्स समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा वेट आपको नहीं करवाएंगे, सीधा बढ़ेंगे हमारे ओवरऑल रैंकिंग के ऊपर, जहाँ पे सबसे ऊपर ईस्टर्न स्टार्स के खिलाड़ी 38 पॉइंट के साथ रहेंगे, गेम लॉर्ड विद 33, 4 रोमानियन मैन विद 32 फॉर टीम रेड, NATUS विंसर की तरफ से 31 फॉर यूनिकॉर्न्स ऑफ लव, रूथलेस ई-स्पोर्ट्स के लिए 23, एज वेल एज डेथ मशीन। टोटल तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 22 टोटल पॉइंट सिक्योर किया गया है। बट नाउ द मेन क्वेश्चन दैट कम्स अप दैट अभी के लिए ये तो टॉप 8 है, टॉप बाकी 8 की अगर बात करें तो वर्टस प्रो 22 पॉइंट, AGONxI8 22, बेसिकतास 8, एंड उसके साथ साथ FTY ई-स्पोर्ट्स भी 170। लेकिन उसके बाद अगर हम कहें तो इट्स ARB चैंपियंस, व्हेन टॉक अबाउट इट्स 15 पॉइंट्स उन्होंने भी यहाँ पे कलेक्ट किया है। टीम डूम के पास 11 रहेंगे, 9 फॉर नेक्सस, और उसके बाद गीके ई-स्पोर्ट्स की बात करें 7 टोटल पॉइंट पूरे डे 1 से वो कलेक्ट करके लेके गए। 16 टीम की रैंकिंग हमारे सामने है। बट उसी के साथ साथ देवी और संजनो रूथलेस ई-स्पोर्ट्स प्रो स्क्रिम्स ऑफ मल्टी रीजनल क्लैश जो है वो यहाँ पे आज उनका जो पहला दिन है वो समाप्त हो जाए। बट जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है तो कर दो लाइक, चैनल पे डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो, रूथलेस ई-स्पोर्ट्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, एंड साथ ही साथ अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, ये नाम आप टाइप करो जो आपको नीचे दिख रहा है, आपको शायद मिल जाए, एंड अगर आपको नहीं मिला तो ऑब्वियसली आप शायद डिस्क्रिप्शन से आपको मिल भी जाएगा, तो डेफिनेटली ट्राई टू फॉलो बैक। और इसी के साथ हम लेते हैं एक अलविदा आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय से सी या, मिलते हैं कल ऑन अ डिफरेंट टाइम।